जो तरमीम थी को कानून था वो बहाल हो सकता है। इसी तरह जो पहले जो कवानीन रोके गए थे, उन्हें कलअदम करार दिया गया था, फैसले किए गए थे, वो भी ख़त्म हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सियासतदानों पर ताहयात पाबंदियों के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं और अपील के हक़ के हवाले से जो चीज़ें थी, उसके मुतल्लिक़ भी बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो हो सकती है। इसलिए आज जो है वो एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा काजी फैज साहब की तरफ से, और जिस तरह वो केसों को लेके चल रहे हैं और जिस तरह बेंच आज फुल कोर्ट बना है और उसकी समाअत होने जा रही है, जिस तरह आज लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला हुआ है, तो इससे लग रहा है कि जो है वो बड़े फेयर तरीके से चीज़ें आगे लेके चली जाएंगी और लोगों को दिखाया जाएगा कि जो है वो केस किस तरह चल रहे हैं और केस किस तरह जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो सबसे इंतहाई अहम जो चीज़ है कि एक आम आदमी को जो एक्सेस है सुप्रीम कोर्ट तक, वो कैसे उसको यकीनी बनाया जाएगा कि उसकी रसाई जो है वो कैसे मुमकिन हो सकेगी। 56,000 अच्छा, आप जावेद हमारे साथ ही रहेगा, शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आप क्या कहते हैं इससे मुतल्लिक? क्या ऐसा अदालती निज़ाम जो मज़लूम के लिए एक उम्मीद का ज़रिया हो और जुल्म और कानून शिकन के खिलाफ जो है वो खौफ की अलामत बन सके? क्या ये जस्टिस जो हमारे नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या उनके टेन्योर में ये चीज़ पॉसिबल हो सकेगी? जी, सवाल जरा दोबारा दोहराइएगा। शाहिद साहब, मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो टेन्योर अब शुरू हुआ है नए चीफ जस्टिस का, क्या इसमें ऐसा अदालती निज़ाम जो मज़लूम के लिए उम्मीद का ज़रिया हो और ज़ालिम और कानून शिकन के खिलाफ खौफ की अलामत हो, क्या साबित हो सकेगा इससे? देखें, एक बेहतर की उम्मीद की जा सकती है और जिस तरह से मुख्तलिफ मौकों पर हमने ये देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुख्तलिफ आइनी और कानूनी उमूर पर न सिर्फ मुल्क के आइनी सरबराह यानी सदर आरिफ अलवी को खतूत लिखे, बल्कि अपने जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भी मुख्तलिफ मौकों पर उन्होंने निशानदेही की चीज़ों की जो आइनी और कानूनी तौर पर उन्हें ये लगता था कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है वही बेंचमार्क उन्हें अपने दौर में भी सेट करना होगा और ये 1.25 साल उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन जितना कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उनका हमारे सामने है सुप्रीम कोर्ट का और एज अ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, तो उसमें एक चीज वाजे है कि उनकी कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वो अपने सेट प्रिंसिपल्स पर आगे बढ़ते हैं। और अगर उन्हीं सेट प्रिंसिपल्स पर वो आगे बढ़े तो अगला 1.25 साल सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा हंगामा खेज भी हो सकता है और बड़ा जिसे कहते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आज के दिन जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, खासकर लाइव प्रोसीडिंग्स का, पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा तारीख में नहीं हुआ ने नहीं देखा। और ये पहली मर्तबा उन्होंने न सिर्फ 2 कामों पे बहुत बड़ा दिल किया है। एक, उन्होंने पहली जो समाअत है वो फुल कोर्ट रखी है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर अदालत के अंदर किसी उमूर पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी मौजूद है तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकता है, उसे इख्तलाफ का दर्जा ना दिया जाए। आज मेरा ख्याल है वो जजेस जो काजी फायज ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस सरदार तारिक मसूद या अफरीदी या अथर मिनल्ला से कोई और ओपिनियन रखते भी हैं तो वो आज अपना ओपिनियन रखेंगे और आवाम उसे बराह रास्त सुनेगी। तो सर ये बताएगा कि क्या ये खुशाइन बात है, क्या लोगों का एतमाद इससे बहाल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट पर? मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। एक आम आदमी को आज से पहले हम टिकर्स के जरिए रिपोर्ट करते थे, हम बीपर्स के जरिए रिपोर्ट करते थे, लेकिन एक आम आदमी जो एक्सेस नहीं रखता सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 तक, आज वो अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेगा कि उसके मुल्क के जो काजी उल कज़ा चीफ जस्टिस हैं या जो मुंसिफीन हैं उनका फैसले करते हुए क्या राय होती है, किस तरीके की वो प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो एक आम आदमी देखेगा। मेरा ख्याल है ये उसके लिए लर्निंग होगी कि कोर्ट रूम नंबर 1 जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में लगेगी और उसमें फुल कोर्ट जो आपकी अवेलेबल फुल कोर्ट है 15 जजेस की वो बैठी हुई होगी और उनके सामने प्रोसीडिंग्स हो रही होंगी। तो मेरा ख्याल है ये एक पॉजिटिव स्टेप है, इससे चीजें बेहतरी की तरफ स्टेप है और ये खुशाइन बात है एक आम पब्लिक के लिए। शाहिद हमारे साथ मौजूद ही रहेगा। जावेद बलोच के लिए रुख करेंगे एक बार फिर। जावेद बताएगा कि 11:30 का वक्त दिया गया था और बताया जा रहा था कि बाकायदा तौर पर जो है समाअत शुरू होगी। 11:35 हो चुके हैं, क्या अपडेट है आपके पास इससे मुतल्लिक? देखें, इंतजाम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और अभी जो है वो थोड़ी देर बाद समाअत जो है वो शुरू होने जा रही है जी। इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से भी ये भी इस्तदा आई है कि जो दरखास्तें थी नैब तरमीम के हवाले से उसे मुस्तरद करने के हवाले से भी एक दरखास्त सामने आई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि
जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे और उनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर हम रुख करेंगे शाहिद अनिंद का। अच्छा शाहिद, इस हवाले से ये भी बताएगा कि जो इख्तलाफात हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के, क्या वो इख्तलाफात जो हैं क्या वो अब ख़त्म होंगे जजेस के साथ? इख्तलाफात अगर आप कह रहे हैं जजेस के साथ, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं उसे इख्तलाफ नहीं, मैं उसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहता हूँ। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर इदारे में, हर घर में मौजूद होता है। और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अगर हम इख्तलाफ का दर्जा देंगे तो हमने ये देखा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जब जब कोई मौका आया तो कोई भी ऐसी तकरीब हुई जहां पर उमर अता बंदयाल साहब ने ज़रूरी समझा कि एज अ सीनियर जज काजी फायज ईसा मौजूद हूँ, तो वो वहाँ मौजूद नजर आए, चाहे वो शजरकारी की मुहिम हो या गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल एक होने वाली तकरीब जिससे उन्होंने आखिरी खिताब किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसे हम इख्तलाफ कह सकते हैं, ज़रूर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद था। और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में एक कह सकते हैं आपके कड़ा दौर था, वो कड़ा दौर गुजर गया। आज बेंचमार्क सेट करने का दिन है और मेरे ख्याल से इब्तदाई 2 इक़दामात में जस्टिस काजी फायज ईसा ने कुछ बेंचमार्क सेट किए हैं और आज की जो प्रोसीडिंग्स होंगी ये मजीद हमें आगे बताएंगी कि आगे के बेंचमार्क क्या हैं। अच्छा शाहिद साहब, इसके साथ ये भी बता दें कि आपके ज़रा क्या कहते हैं कि समाअत का डिसीजन कैसा होगा, मतलब कि आपके ज़रा क्या कहते हैं कि किसी भी किस्म का रिलीफ मुतवक्किल होगा? देखें, एक बात याद रखिए, कभी भी कोर्ट के फैसले के मुतालिक ज़राए कभी भी कुछ नहीं कह सकते। और मैंने आपसे पहले एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि काजी फायज ईसा साहब के बारे में ये प्रेडिक्ट करना कि वो एक किसी फरीक को फ़ायदा देंगे और किसी फरीक को खिलाफ जाएंगे सिर्फ अपनी ओपिनियन की बुनियाद पर, मुझे ऐसा नहीं लगता। और ना वो इस किस्म के जज इससे काबिल रहे हैं। उन्होंने जितने भी फैसले दिए हैं उन फैसलों में कवानीन की दलील, उनकी नज़ीरें देकर फैसले दिए। उन्होंने ओपिनियन बेस्ड फैसले नहीं दिए, चाहे वो कोई भी मुकदमात हों। यहाँ तक कि उन्हें कुछ फैसलों के नतीजे में इताब भी भुगतना पड़ा, न सिर्फ उन्हें, उनकी अहलिया को भुगतना पड़ा। और मेरा ख्याल है कि कल उन्होंने बहुत ही बेहतर अंदाज में उस सारी सूरत हाल का जवाब अपने हल्फ में दिया जब अपनी शरीक हयात को बुला के अपने करीब खड़ा किया। जी ठीक है शाहिद, आप साथ ही रहेगा और जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर उनकी तरफ रुख करेंगे हम। जावेद बताएगा क्या अपडेट है आपके पास, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जावेद बलोच से एक बार फिर हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर हम रुख करेंगे शाहिद उनकी तरफ। अच्छा शाहिद, ये बताएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आज इसके ऊपर समाअत होने जा रही है और बताएगा कि इनके अलावा कौन कौन से केसेस तरजीही बुनियादों पर ज़ेर गौर आ सकते हैं इसके बाद? देखें, सबसे अहमियत की नौयत के जो इस वक्त केसेस हैं वो आपके मुल्क में, चाहे आप इसे बेहतर कहें या बुरा कहें, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल, आइनी और पॉलिटिकल मैटर्स ने सुप्रीम कोर्ट को घेर रखा है। एक आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि आए रोज किसी आइनी और किसी सियासी मामले पर एक जो है पिटीशन। And may I know who the counsel for the 9 petitioners are? One is yourself. In 6, 7 and 12. 6, 7 and 12. It's myself and Imtiaz Siddiqui sahab. 6, 7 and 12. And 12 it is yourself. You will argue. And Mr. Imtiaz Siddiqui sahab, sir ji. No, who will argue? Sir, I am going to give a brief outlay. Okay. Achha, and then Imtiaz Siddiqui will take over. The rest of the petitioners, who are they? I think naam batate rahe. Zaman Khan Wardik, petitioner in person from Lahore. Registry. Zaman Khan Wardik Constitution petition 10, my lord. 10. My lord. You are petitioner or counsel? I'm petitioner, my lord. In person. Okay, petitioner in person. Okay, the other petitions? Mr. Hussain, can you please is the come to the mic, please? जी मोहम्मद सैन चोटिया साहब लाहौर से वो नहीं आ सके, उन्होंने आना था। मैं AOR हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। तो मैं भाई आ नहीं सके का मतलब क्या है? क्यों नहीं आ सके? उन्होंने आना था, मुझे नहीं पता, मैं तो फिर यहाँ पर अटेंड कर रही हूँ। तो मैडम ने कहा कि आप CP नंबर 8 आप बहस करेंगी या नहीं करेंगी, या अडॉप्ट करेंगी आर्गुमेंट्स? जी अडॉप्ट। अच्छा चलें, और कोई पिटीशन रह गए? Mr. Irfan, Hassan Irfan has He's filed. from Lahore. I think he's Lahore. appearing He from filed. Lahore. 19 में नहीं है कोई?
अच्छा CP 19 में ठीक है Faez sahab, we don't want to cut you short, but if you can be more precise, just appreciate that some of us have heard this matter and some of us are going to hear it for the first time. There was a question, because since the bench no longer, one member of the bench has retired, to reconstitute it. The question had also arisen whether I should be part of the bench. Then the related question would arise, should the other two members be part of the bench, because one way or the other our interests may be set, our interests are affected. Then the related question arose whether all those who, inshallah, become Chief Justice, should they be part of the bench? Should their two senior judges be part of the bench? So I think the best way to resolve it was to constitute a full court, if you agree. And there are also requests in, I think, 3 CMAs for full court. So that is the reason why the full court has, all the judges have convened. Frankly speaking, let me be very clear. Why did I file this petition? No. We will come to your petition. I'm fully, we are with you, sir. Full court should be there. Achha, so since there are CMA number 4207 has been filed by Pakistan Bar Council, who represents Pakistan Bar Council? So they had sought full court, and there are 2 more CMAs, CMA 3166 and 3199. They had also sought full court. So these applications have become, in a way, allowed. Okay? So now we proceed to hear your contentions. The rest of you can take a seat. Qazi Saab will first address, and then the others can address. I'll hand it over to Mr. Imtiaz Siddiqui, sir, because he's, to be very honest, sir, at the time of the, when this was first heard by 8 judges, Mr. Imtiaz Siddiqui led the arguments. He's fully prepared, but yes, I would like to say a few words. Let's forget the past. Today is the first date of hearing. I'll say a few words, and then I'll leave the floor to Mr. Imtiaz Siddiqui. I want to make it one thing very clear. When this Supreme Court Practice and Procedure Act came into force, or came in the form of a bill and later became an act, I read clauses 1 and 2 thereof. Your lords have this act in front of you? I think one of the petitioners has filed it. It's CMA 5104. I don't know who is 5104. It's attached with it. Please read it. Argue as you please. By the end of your lordship, which is the petition that you? I will be starting from 6, sir, because 6 is the one when the orders have been passed. But may I also say? No, you started with the Practice and Procedure Act. You wanted to read it. I'll read it. But before I do that, there is an order dated 2nd of May. Ajay sir, we have to forget about the past. Because we are not, don't do this. Okay, so I'll say, let's bury the past. Don't bury it, it's past. You can't bury the past. So, all right, for the time being, argue as if you are arguing for the first time. Thank you. Well, I do say here. I may ask a question. Khwaja Sahab, idhar dekhen. You have endorsed the sitting of the full court, which is fine, but I'm just wondering what will happen to Section 5 in the event, if the law is upheld. There is a right of appeal that is provided under this law. In that case, then, how do you visualize that right being exercised? I was going to come to that. I'm very thankful to leadership, because if the full court is going to hear it, then I have no right of appeal. But in the event, since we are hearing the vagaries of this law, what will happen to this right if a full court is now going to proceed with the matter? In fact, when I go through the law, there are so many things. वो अपनी जगह है ना जी. Let's just assume बहस हो जाएगी. Section 5 को फिर क्या होगा? Will Section 5 not be exercised by one party? But it says that an appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184.
of the Constitution. Khalid Sahab, if I may interject, you please proceed as you want to. Let's read the Act together. Whatever you want to comment about the Act, and please also address the query that has been addressed to you in your own manner as you wish. So let's start with the Act at least. I would like to answer that when I'm going through this, because this is a... So let's start reading the Act. You want to read the Act or you don't want to read the Act? I will read the Act now. Ji, chaliye. I'll start with Section 1. But first of all, let me say this one. I would just state this thing, that by the end of your honest tenure, if I'm still alive, I would have completed 50 years of practice in this honorable court. Can you please read? No, let's not do that. Let me say. This is perfect time. When I saw this Act, let's read it. When you saw it, we're not interested. Well, see the Section 2 thereof. Please read the whole Act. I read it. Whereas Article 191, I'm reading the preamble. 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. Now, at present, there are the 1980 rules which govern the procedure here in the Supreme Court. Before that, there were the 1956 rules. The 1980 rules were on account of a judgment which came in 1979. Qazi Sahab, please focus. Okay, I'm focusing myself. We know all the 1980 rules. Background. No, please don't. We don't. We are. The country expects 57,000 cases to be decided. We would love to hear you, but let's focus on your petition. Now you have started reading. You started giving the history of 1980 rules. We know that. If you'll ask a question, please answer that. But proceed with your arguments. I have said about this 1980 rules for the simple reason that if I read now Section 2, it says... Please continue, don't jump to Section 2. Right. And whereas Article 10A is of the Constitution, mandated right to fair trial and due process. Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law. Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence, and Islam guarantees right of appeal. Therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, this law is being enacted. The court will see that there is no mention of item 55 of the federal legislative list as far as this preamble is concerned. It is silent. Because that is the basic, what can the parliament do? Parliament is not omnipotent. It has to go according to certain constitutional limitations. That principle of old principle that the parliament is supreme means that they are omnipotent, led by Dicey and influenced by Blackstone and Co. We all agree that Parliament has limitations. This law doesn't say that. Don't insert words which are not written there. Law doesn't say Parliament is omnipotent. Just restrict yourself to the act which you have challenged. When I say this thing, that this very preamble does not mention. It's noted. Read it on. Okay. And whereas it is expedient to make a law providing for certain practice and procedures of the Supreme Court. It is hereby enacted as follows. This act shall be called the Supreme Court Practice and Procedures Act 2023, and it shall come into force at once. Constitution of benches, that the crucial question which arose. Every cause, appeal or matter before the Supreme Court shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee
comprising the Chief Justice of Pakistan and 2 next most senior judges in order of seniority. Now, the 1980 rules, Order 11, read in this manner. Well, if you have to correlate, it may be important to do that. पहले अगर इस एक्ट को पढ़ लें हम, ताकि हम सबको पता लग जाए कि इसमें क्या है, क्या नहीं. Thank you very much. Sir, which rule were you referring to? If we want to continue like this, we'll go ahead. But my viewpoint is this, that this frame of these rules under Article 191 is the prerogative of the Supreme Court, sitting as a full court. When they framed the 1980 rules, the entire court sat together, and in their wisdom, together they framed the rules. This abdication or this intrusion by the Parliament into the affairs of the Supreme Court prompted me to come forward and file this petition. Because I feel that every institution must remain within its own domain. Khwaja Sahab, I'm here on this side. It's right here. I'm here on this side. If you could kindly formulate your exact legal proposition. What you are suggesting is that you do not have any objection to the untrammeled, unaccountable powers in one office? Is that your question? My contention is this. Are you supporting what has happened in the past? I am supporting what happened in 1980, and I'm supporting... So what is your legal proposition? My legal proposition is this, that this power of forming the benches, etc., is the domain of the Supreme Court itself. If this is your proposition... I think you should read the law first, Khwaja Sahab, and then formulate the points. Let us first formulate. Act पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर एक-एक को देखें. It is only 2 pages act. It is only... Let me follow the Chief Justice. Let me read the law, and then we make my submission. If I may make your job easier, undoubtedly, it's sometimes very difficult and disconcerting if questions... I know, it's very difficult to answer questions. Hazur, if you are receiving a lot of questions from different sides, you don't even know who is asking the questions. If one of your associates jots the questions down, please don't respond to it. We let you argue it as you want to. Let me just finish. You read the act. You just point out, either you say this entire act is ultra vires a constitution, that's one contention. If there are certain particular portions of the act which you think are ultra vires a constitution, please, as you're arguing, point that, formulate the contention and move ahead. You don't need to respond to every query immediately. It will make your life very difficult because you won't even know where the question is coming from. One of your associates can take. When you're done with your arguments, you can absorb the questions and respond. We will give you time to respond to the queries. Okay? So, please continue with the act. Just can you take down the points and so that you can answer them. Second part of this section 2, soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure, including the holding meetings and constitution of benches, provided that till such time the procedure is determined under this subsection, the meeting of the committee for the purposes of subsection 1 shall be convened by the Chief Justice or other 2 members of the committee as the case may be. The decisions of the committee shall be by majority. Now, this is what the Parliament has enacted. And the provision which they have used is Article 191. At this stage, I would simply say this thing, that when I'm myself and Imtiaz will be answering your question and promulgating, we would certainly refer to item 55 of the Federal Legislative List, which spells out whether the Parliament can make enactments relating to Supreme Court.
if I may read 55 as this state, it may be. Argue as you want. Well, all right. I'm just saying that your lordship should note item 55 of the federal legislative list. Let's read it together. You wanted to read it? Let's read it. We'll read it together. Khwaja Sahab, I think before going, I'm here, left side, your right side. Before going to this entry, if you want, you may read Article 191 of the Constitution. What it says? 191 also. In fact, I can start with Article 70, go on to 142, and then read 191 and go up to 55. Article 70 gives the power of legislation, and it is to the effect legislative procedure. And what it says is, a bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate. I will skip that. I'll go straight on to subclause 4 of Article 70. In this article and the succeeding provisions of the Constitution, federal legislative list means the federal legislative list in the 4th schedule. Then there is Article 141. Subject to the Constitution, Majlis and Shura Parliament may make laws, including the laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and the Provincial Assembly may make laws for the province or any part thereof. 142. Subject to the Constitution, Majlis and Shura shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Then I take your lordship to 191, which is to the effect subject to the Constitution. Again, subject to the Constitution and law. It is the Supreme Court. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. The crucial words here are that the power has been given to the Supreme Court to regulate its practice and procedure. These powers are under the Constitution, your right side. These powers are under the Constitution and the law. Constitution and the law. I'll say also, I'll come to that also. Because when I read 55, then it will be clearer. Khwaja, if I may request my learned brother, I know it's very disconcerting, so many judges asking questions. So we will let you argue in your own way, and we will ask you questions. You don't respond, you just note it. And because then I know your chain of thought will... Point is noted. Chain of thought we don't want to break. Constitution and law. Point is noted. Constitution and law. Point is noted of my lord that what will be my proposition, and also what Mr. Mansoor Ali Shah has said, that how will I go and make my propositions, and to say how this law is not tenable. But may I read 55 as it states? Please do. Because your lord may ask questions on that. 55 of the federal legislative list. It says jurisdiction and powers of all courts can be subject to the power of the Parliament under 142 and 74. Just read it as is. Don't interpret it. Then you can interpret it. Okay, I'll go along with that. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list, and to such extent as is expressly authorized.
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नई अदालती तारीख रकम कर दी है और मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त कार्रवाई की गई है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 15 रुकनी फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कर रखा है। आपने बराह रास्त भी इससे मतलब मुलाहिजा किया है और सबसे पहले जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो है ताख़ीर पर मुआवज़त की गई है और उनकी जानिब से कहा गया कि हमसे पहले बेंच मेंबर केस जो हैं वो सुन चुके हैं और आपको बताएं कि आपने बराह रास्त ये जो है समाअत से मुलाहिजा की है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नई अदालती तारीख रकम कर दी है, जबकि मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त ये कार्रवाई की गई है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 15 रुकनी फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कर रहा है। आपको इससे मुताल्लिक आपको बताएं कि आपने ये बराह रास्त समाअत भी दी है, देखी है, मुलाहिजा की है और आज जो है बराह रास्त ये बताया जा रहा था कि लाइव ट्रांसमिशन जो है वो दिखाई जाएगी और ये आपने बराह रास्त मुलाहिजा की है। इससे पहले जो है तैयारियां की जा रही थी और अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा तौर पर इसकी जो है समाअत का आगाज़ किया था और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नई अदालती तारीख रकम कर दी है, जबकि मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त ये कार्रवाई दिखाई जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 15 रुकनी फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कर रहा है। कोशिश करें अपने दलाइल को महदूद रखें। जस्टिस का फ़रीक़ैन को हदायत जारी की गई हैं समाअत के दौरान, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना ख़त्म होने का भी इम्कान है, जबकि साबिक जस्टिस उमर बंदियाल ने एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया था। आपको बताएं कि ये तारीख रकम की गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नई अदालती तारीख रकम कर दी है। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त ये कार्रवाई दिखाई जा रही है, जो कि आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया है और इससे पहले जो है काजी फाइज ईसा की जानिब से मुआवज़त की गई है ताख़ीर के ऊपर और तमाम तर इंतज़ामात किए जा रहे थे समाअत से मुतल्लिक और उनकी जानिब से इस समाअत के दौरान ये भी कहा गया कि हमसे पहले जो बेंच मेंबरान हैं वो केस पहले ही सुन चुके हैं। It may be important to do that. पहले अगर इस एक्ट को पढ़ लें हम ताकि हम सबको पता लग जाए कि इसमें क्या है क्या नहीं। Thank you very much. Sir, which rule were you referring? If they want to continue like this, we'll go ahead. But why? हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर दी गई है और ये समाअत जारी है और इस समाअत के दौरान जो है रिमार्क्स दिए गए हैं। कोशिश करें कि अपने दलाइल को महदूद रखें। चीफ जस्टिस की फ़रीक़ैन को ये हदायत जारी की गई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना ख़त्म होने का भी इम्कान है। साबिक जस्टिस उमर बंदियाल ने एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया था। आपको अपडेट कर रखे हैं इस हवाले से कि आपने बराह रास्त के समाअत भी मुलाहिजा की है और नई अदालती तारीख रकम हुई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट केस की बराह रास्त ये समाअत जारी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहले ही रोज़ इनकलाबी इक़दाम सामने आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की लाइव समाअत जो है अपने बराह रास्त भी ये देखी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस के दाएं जानिब सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद सीट पर बराजमान थे। चीफ जस्टिस के बाएं जानिब जस्टिस एजाजुल हसन बैठे हैं, जबकि फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल जारी हैं और उनकी जानिब से ये हिदायत भी जारी की गई हैं कि कोशिश करें कि अपने दलाइल महदूद रखें। वफाकी हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है और तमाम दरखास्तें मुस्तरद की जाएँ। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट से ये इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि ये इनकलाबी इक़दाम है। नई अदालती तारीख रकम की गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में केस की बराह रास्त समाअत जारी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ये लाइव समाअत थी और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस के दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद सीट पर बराजमान है और इसके अलावा चीफ जस्टिस के बाएं जानिब जस्टिस एजाजुल हसन बैठे हैं। फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल भी जारी हैं और इससे पहले जो है ये रिमार्क्स और हदायत जारी की गई थी कि कोशिश करें कि अपने दलाइल महदूद रखें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए थे और वफाकी हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। तमाम दरखास्तें मुस्तरद की जाएँ। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट से ये इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि आज सुबह से तैयारियां की जा रही थीं और ये बताया जा रहा था कि आज लाइव ट्रांसमिशन जो है उनकी तैयारियां की जा रही हैं और इजाज़त ली जा रही थी और आपने देखा कि नई अदालती तारीख रकम हुई है और ये आते साथ ही एक इनकलाबी इक़दाम सामने आया है नई चीफ जस्टिस का, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की लाइव समाअत अभी जारी है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ये समाअत का रखा है और इससे मुताल्लिक हदायत भी जारी की गई हैं। Before the committee constituted under section 2 examination, and if the committee is of the view
that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by one of importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by one of part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. I will simply say on this thing that this is on your right side, but not as much right as previously. Yes, my lord. Over here, question, so your associates can note this. This power that Section 3 purports to confer on the committee with regard to examine the question and therefore act as a gateway perhaps, is this a power or is this a judicial power or is this an administrative / statutory power? Because 183 is ultimately a judicial power. Because then it seems to me that the latter part of this section says it shall constitute a bench. That seems to imply that the power exercised by the committee is not a judicial power but an administrative power. So can Parliament whittle down? This is a question, please note. Yes, it's judicial, and in fact that will be exactly my proposition. Please hear his lordship. Can the Parliament whittle down the judicial power under 184(3) by providing that this committee will act as a gateway and block out in exercise of administrative power anything that the committee feels, 3 judges, not the whole of the Supreme Court, but 3 judges, senior most respectable judges, but in the end just 3 judges, block out any case that they, in exercise of administrative power, they will deprive the Supreme Court from exercising judicial power. So you kindly note the question and you address it at an. And I will go even further than that. And also a supplementary question connected to this. Earlier, the justice solely had this power. So there was a likelihood that the outcome of the cases could also have been influenced by the constitution of the bench. So that eroded the independence of judiciary. If this argument is accepted, then the earlier traditional model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of the cases by constitution of benches, and this probably was the mischief that the Parliament wanted to address. If I may add, there is a judgment of this court, the official pronouncement on that as to what procedure would be followed by the Chief Justice to invoke jurisdiction of this court under Article 183. And it says where a bench, 3-member bench, 2-member bench, but a bench comes to the conclusion that there is a matter of public importance affecting fundamental rights, they may recommend to the Honorable Chief Justice that a bench be constituted. And the Honorable Chief Justice, after seeing the reasons that the bench has assigned for recommending, he may or may not, but at least he would recall reasons why he thinks he disagrees with the recommendations, or thereafter he can proceed. And so there is a judicial pronouncement on that. In fact, I'm sorry, since may I say, Honorable Chief Justice has said that we can only ask questions and not for you to respond immediately. So let me, with all due respect, ask a supplemental to what the supplemental put to you by my learned brother, colleague Justice Atar Minallah. It seems to me that the power to constitute a bench
which is the subject matter of Section 2, constituting a bench does not block the exercise of judicial power. It simply determines which is the bench that is to exercise judicial power. Yeah. But my question to you is that Section 3 seems to go beyond that. Section 3 is separate from Section 2. It actually blocks, it confers on the 3-member committee exercising administrative powers to actually block the exercise of judicial powers. It's not a question of constitution of benches. They can say, sorry, out, nothing further, matter ends. The question is this is not a question of composition of benches. That is power universally on them in terms of Section 2. The question here, it seems to me, is the very blocking of the judicial power itself. Can Parliament do that? Question is maybe noted. And you don't have to answer. No, I'm not answering. Carry on. I'm not answering. The Honorable Chief Justice said you carry on with your solutions. Just note the question. This thing, I may add one thing to it. It also deprives me of my right, which they have said that they are passing this thing under Article 10A of the Constitution. Here, if Section 3 is there, I'm being condemned. I'm not being heard. Who is the that? party is not being heard. Who is when you're using the word I? Who is the I here? Litigant. The litigant. Because एक second, Tahammul. The litigant. That leads me to another question. Your petitioners, do they have an interest in the matter, or they've come purely as a matter of public interest? I am looking at Section 3. No, I'm not talking that. I'm not asking a question of the petitioners. Do they have an interest in any case why they brought this challenge, or they brought it in the public interest? What is the answer? Answer to that is that it's a public interest. You have no personal interest in the matter, you or your client. I have no personal interest. You meaning your client. But let me say this thing. No, I just want to know an answer to that. Myself and Mr. Siddiqui, we are doing this as pro bono. We are doing it because we want to know, I don't know who you're speaking for. Are you speaking for counsel? Are you speaking for petitioners? I am speaking for the petitioner, and I'm saying this thing that we brought this petition in the interest. You got the answer. Now please proceed. I've got the answer. In the interest that the law should take its course. The Constitution must be upheld. And I am also saying that I'm sure with such preliminaries sitting there, the whole object is that first of all, the independence of the judiciary should not be in any manner smeared by any other institution. And secondly, please. We are not going to platitudes. I will not make a political speech. I'll refrain from that. Khwaja Sahab, just a confusion which you can answer later. So what you are saying is that the untrammeled, unaccountable powers of the Chief Justice exclusively to decide constitution of benches, you were satisfied with that, and that fulfilled the conditions of Article 10A. But if it is done by the Chief Justice and 2 senior judges, you have an objection to that. That's your proposition. I think your Lordship is possibly not. I've not been able to explain. Section 2 stands on its own footing, and I have objection on that. Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. It does not. Instead of Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. Instead of let us clarify. Is it your argument that Section 3 affects the judicial powers of this court? Yes, ma'am. Curtails judicial powers of this court, because this court means the Chief Justice and all judges. So it confines that power to 3 judges and not to the judges of the Supreme Court. That's not fine. 2 and 3 have to be read independently and separate. Now, please. There are 2 in exercise of administrative power.
I'm trying to make your life easy, but if you don't want it to be made easy, that's fine. I mean, please don't interrupt. I requested you, please keep noting the queries. Naturally, you have a chain of thought, you have submissions. We don't want you to get, I mean, I can appreciate your position, so many judges, so many questions, which one do you answer? And then your argument is lost sight of and you go somewhere else. So please persevere with your thing, keep noting the questions, and you can address them. So I'm trying to make your life easy, unless you don't want it to be made easy. So proceed with your case. Note the question, respond to it later. In fact, to be very honest, I welcome this interruption. Can I ask you a question? Can I ask? All right. Please. What about the office of the Chief Justice after passing of this act? Don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? Because he would be left with no powers then. We noted this down, and in fact, I would say that the Chief Justice powers will be whittled down. As if this law goes through, the powers will be whittled down, but we'll explain it in something. And this has been held in many places, that the Chief Justice has the power to form the benches, is the rooster, and I can go back years and years when a chain of judgments have come in, and the latest one is, of course, 2000. I will continue. Let me continue. Let me continue. Then is a question. Mr. Khwaja. Yes, sir. Right side. I will add to it. Whether the power of the Supreme Court has been curtailed or the power of the Chief Justice. I think that's the moot question. The answer to that is that it's noted, sir. It's noted, and I will only say this thing, that Supreme Court, what is Supreme Court? Supreme Court is Chief Justice and so many other judges. We'll be sitting here till 12 o'clock. I know that, sir. Let's अपना argument करें. अभी तो हम section 3 पे पहुंचे. Let me, on section 3, I will only say this thing, that this certainly is the Parliament has taken away the power not only from the Supreme Court and the judges, but also it has condemned me unheard and violated the provisions of Article 10A, which provides for a fair trial. So I will file a petition. I've not even heard, and 3 judges or about 2 judges, they will decide on an administrative side, and I'll be out. So the question of 184.3 will become totally redundant. This is my point. Therefore, to that extent, section 3 is present. Then next is 4. Interpretation of the Constitution. In the matters where interpretation of the constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court. Well, I will. Do you object? First, say I object to this provision, or you endorse it. I will say this, sir, that in the matters of interpretation of the Constitution, when you are, all the judges are competent to interpret the Constitution. By limiting it to 5 or limiting it to 3 or why not 7? Why not 6? Please. I object to this thing, that this is a limitation. No, it's not a limitation. It says not less than. It could be a full court like the present court. So are you just say, is this ultra vires the Constitution, section 4? Say something, we should note it. On this, I will only say this thing, that putting a clause that the bench should be not less than 5, that possibly is expressing, shall I say, not confidence in less than 5 judges. Because this is very strange, because all judges are equal. Your Lordship is the first amongst the equal, but every other judge of the Supreme Court has the same powers and the same acumen. So by saying this thing, not less than 5, then there's a question of appeal, and which is a very relevant point. Khwaja Sahab, as I understand your earlier proposition, you are satisfied that the Chief Justice in the previous model, being the master of the roster, had untrammeled power to
constitute a bench of 3 members, and you were satisfied with that. I have, I have noted this thing. Yes. Your Lordship did not, sir. I will not be able to explain my shortcoming. Explain later. On the question of benches, I have stated with this thing that this power should be exercised by the full court, not by the parliament. How the benches are to be. आगे बढ़ते हैं. I will dwell on that. In a nutshell, you are suggesting that the powers as master of the roster in the Chief Justice were also unconstitutional. No, sir. This is your No, sir. I'm saying this thing that another 1980 rules, that power had been given. If all of you sitting together feel that under 191 that this should be changed, then it is your function. It is not the function of the parliament. Okay, now let's proceed. We'll ask. I'll do on that. That is the point which needs consideration. 5 is appeal. Yes, Marisa. Section 4. On 4. If my memory serves me right, Section 4, what is the equivalent of Section 4, is part of the Indian Constitution as an article of that Constitution. It was a part of the 1956 Constitution as an article of that Constitution. Now, question is that when the framers of the present Constitution had before them this model where this very power was conferred on the Supreme Court in the way that what in India they are called constitution benches, question is this: that model, that aspect was not accepted by the framers of the present Constitution because they had a model both from India and from Pakistan itself. So the question is this: if that was not accepted, does this not require constitutional amendment? Can Parliament do something which the framers of the Constitution deliberately seem to have left out, despite the earlier models? Can Parliament then, in exercise of sub-constitutional jurisdiction, namely legislative competence, do something that was earlier part of the Constitution? This is the question. Please note. Yeah, it's noted, sir, and I may add on to this. साहब मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी. जी. मैं इधर हूँ जी. जी सर. मैं बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा को फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है. नहीं सर. सुन लीजिए, सवाल तो सुन लें. जी जी. कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है. ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसे नहीं है. आपने यही कहा, आपने कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर ऐसे नहीं. सुप्रीम कोर्ट नहीं सर ऐसे नहीं है. चलिए बस नोट कर लीजिए. मैं नोट कर लिए. जब सुप्रीम कोर्ट आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में मैं बाद में जवाब देता. ठीक है, अदरवाइज तो आप आपकी मुश्किल काम हो जाएगा. मैं आई एम क्वाइट आई हैव वेरी नहीं आगे बढ़ते हैं. I have worked with all of you, sir. आगे बढ़िए. I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, ma'am. If I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you. Surely, the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative competence under Article 191, trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution,
the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? Not through ordinary legislation. आप नोट कर लें, जवाब ना दें. Not through ordinary legislation. If I will really request my colleagues that they are making, including myself, are making your life impossible. No, please, no, you are very fine. I'm learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us. Now, please, we're not even reading the act, and we are getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section. We are not even making progress. Please continue in your way. आगे बढ़ते हैं. Let me say this. Mr. Khwaja, Khwaja sahab, section 5 से आगे पढ़ लीजिए. Another question with regard to appeal. आप देखें, हमारे पास already एक dictator का ordinance था, Law Reform Ordinance 1972. उसके तहत Article 199 के लिए appeal provide की गई before 2 member benches. We are following it. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? बहुत अपील का राइट दिया है, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199 फिर आर्टिकल 183 84(3). ये क्या दोनों में? Sir, it is noted. We'll answer this thing, what Parliament can do and what Parliament can do many things. My Lord has said so. But there is a procedure provided. We'll answer that. भाई साहब, अभी जो आपकी जरूरत नहीं है, आप I will not answer it. पहले एक्ट को खत्म कर Section 5 से आप आगे बढ़ लीजिए. Khwaja sahab, you have collected 100 questions. Just here, the Law Reforms Ordinance of 1972. This is the question to you. Regulated right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clause on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clause is there only in respect of the Supreme Court. Law Reforms Ordinance didn't do anything with the Supreme Court. It only affected intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent list, which is now no longer there, and also the clause was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the Law Reforms Ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clause. Question noted, sir. And appreciate. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person of this Act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. So what you have to do, you're saying I'm not going to do it? So you have challenged the law, you have to challenge it. Appeal shall lie within 30 days. We've read the English of it. What's wrong with it? Tell us that. As far as Section 5 is concerned, is it good, is it bad? First tell us that. Well, it says that appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184(3), then why is this not they included in Clause 2, whereby my 184(3) application will be disposed of? The way I was taught law was the
not the council asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes, I am. No, I am not. These are my reasons. My lord, I have a reservation on this. You may have reservations. Tell us unconstitutional about it. But then let me explain it to them, because if I start explaining it at this stage, it will take your time. But I will say this thing, that this section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in section 2. Should is different from ultra vires a constitution. It ought to have been given. What then you go and move a bill in parliament? We are saying, are you opposed to section 5? Give us legal reasonings, or you say it's okay. अब उनसे आप पूछेंगे. You have done this. नहीं ये नहीं आप जवाब दीजिए ना. आपने petition लाए. This is not fair. इसमें to make it more simple, you don't want your client to have a right of appeal. So, sir, you first say it's unconstitutional, it's constitutional. You're not saying anything. You just. यहाँ कोई discussion होता है. Sorry, not on. This is your job in office. My lord, may I say this thing that we divided the. Please answer the question: is this constitutional or unconstitutional? I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना, वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है? Unconstitutional. Well, it's my personal opinion is this, that this section 5 goes beyond the powers which were there with the parliament. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right. There has to be a constitutional amendment to provide an appeal under section 184(3). Okay. And this appeal to this act by an ordinary law cannot provide. I can't seem to reconcile your, which I appear to me to be contradictory submissions. Please let me finish. Please let me finish. Yes, ma'am. On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here, the Parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that the appeal be given, but the manner in which it has been given is wrong. Please take it. I'm saying this thing, that this one, the right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the Constitution. It is unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184(3) is a substantive provision of the Constitution. If you are happy with no appeal. Well, Lord, if a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. I just have a question to you with regard to section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution. Just kindly stop. So this order, question to you is, has two parts. So the first part is, this question, this order, which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191, in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because if I may, and this is the, I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is recently, meaning in the hearing of the case, that anything that this law, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it, because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional.
You don't have to give an answer. If the right to appeal had to be given through an amendment. Yes, next is right to appoint. आप चाहें तो आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्ग्यूमेंट चलाते रहें, जी आगे बढ़ते हैं। 6 को पढ़िए, 6 right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I personally don't object. Personally की बात कोई नहीं है। I'm not objecting to this because I feel that okay, it's okay. Chaliye, let's get on with it. Section 6 is okay. Okay. Application for fixation of urgent matters. When application pleading urgency or seeking interment filed in a cause, appeal, or matter shall be fixed for it. My objection on this is again that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question on you on this, on Section 7. Now, Section 7 really relates to what has been treated as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, say, in a civil court, into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. The question, therefore, is this. The legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the This was my very first point which I said, that the functions of the Supreme Court have virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I say 7 is ultra-vires. Isme Khwaja Sahab. Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at aspect of independence of judiciary, that is, freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. We will certainly answer your lordship. Please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? Sahab, if I may have a supplemental on Yes, what my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a mental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that
The solution is to put the power in the hands of Parliament. Would that not violate separation of powers? Tomorrow, what is there to prevent? The question to you: what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That is, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, no, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, where would that bring us? With due respect, my lord. Khaja साहब ये एक बात सुनिएगा, इधर एक क्वेश्चन आप इसको खत्म तो कर लेना सेक्शन को। आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लो। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं पढ़ने का अभी पढ़ लेता हूँ सर। ये सवाल बड़े पर्टिनेंट, आप हर चीज आप नोट कर लेना। नोट कर भी दिया मैंने सर। करिएगा ना, मैं बता, मैंने शुरू में ये कहा था। आप शुरू में क्या कह रहे हैं? आप आखिरी सेक्शन पढ़ लें। मैंने शुरू में ये कहा था, आपने शायद इस्लाम और जो ये आप कह रहे हैं, तो इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए। ये अगर ये दखल अंदाजी होगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा, आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर रीडिंग सेक्शन 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. No, when the law is totally ultra virus, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I am ill or I am out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra virus and right of review intra virus. No, what I am saying is, according to your own arguments, the question is that you cannot provide a right of appeal, but you can provide the right of review under 184(3). If 184(3) right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far फैज साहब फिर आप अपने लिए आप जरा सुन तो लीजिए ना। आप ये सवाल जो है जरा आप सुन तो लीजिए ना। ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर और फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछे, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए, 2 मिनट हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूँ कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर देना है कि ये इस शिक, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर है, इसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की राइट एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम
آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں رہ کر آپ نے جس کا آپ نے ایک لفظ نہیں ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے اینی میٹر آف پبلک امپورٹنس. چلیں جی پبلک امپورٹنس تو ایک وہ ہے ڈیبیٹیبل کویشچن, ہم یہ کہوں گا آپ کہیں گے وہ ہے, مگر فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, ٹھیک ہے, یہ اس کے پریمبل میں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا تذکرہ کر دیا ہے جس کو آپ نے بس نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے, یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے. یہ آرٹیکل 10(a) کا حوالہ دیتا ہے, آرٹیکل 25 کا دیتا ہے. تو آپ کھڑے ہو اپنی رائے, آپ کالم لکھیے اخبار میں, ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ 184(3) کا جو ہم جو پاور آج استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہم اپیلیٹ پاور نہیں استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں, پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جیورسڈکشن میں بیٹھ گئے, اس کی بہت محدود چیزیں, مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم آپ نے ایک سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کیا ابھی. ذرا آپ پلیز, اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے, اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچیے. ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگز کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں, ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے, پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. تب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کے بالکل 184(3) کے تقاضے میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے, کے پی آن دا بارڈر پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں دس ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے, تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے؟ Point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Sure. Please एक और note कर लें. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution, which relates to High Court. Same alfaz है, वहाँ से वहाँ पे Supreme Court, यहाँ पे High Court. Subject to the Constitution and law. Law तो बनाती है Parliament. आपके arguments हम ये समझें कि Parliament को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी, खुद करेगी. सर मैं इसका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा, कि जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और जो लॉ आएगा वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रखना पड़ेगा. ये भी कि क्या लॉ के तहत क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ये इसका जवाब देंगे जी आपको. इसीलिए तो another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in the exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additionally, through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا, آئینی تقاضے پورے کر لینا. Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا. Application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے میری مرضی, میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. انہوں نے میری مرضی لے لی,
شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی, میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے میری مرضی پہ چلے گا, اس پہ سوال کا جواب دیجئے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی. میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے, ٹھیک ہے. اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم سب, ایوری ون ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ کی پٹیشن لاتے, سپوز میں چیف جسٹس ہوتا, میں اس کو لگاتے ہی نہیں, تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے. کبھی 10 سال پڑھا رہتا, میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ. آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا, میری رائے, میری مرضی, میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں. تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں, مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے, وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے, یہ شک کہ آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈنری لا, یہ ہو نہیں سکتا, بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ لفظ لکھا ہے اگریوڈ پرسن, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر, ذرا اگریڈ, آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کے, اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکو ڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکو ڈک کا آ گیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر یہ ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے, میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا, ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں, اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا, اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس میں جی رائٹلی سائڈ سے. Independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is you have read the law now, اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال خواہش صاحب ادھر مجھے ذرا 5 منٹ لگتے ہیں, آپ مجھے دیکھتے ہیں نہیں سر, آپ اس میں آپ سے صرف اسی سوال چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ
जजेस का बेंच बना सकते हैं ना, तो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं ना 4 में, तो फिर 4 को 5 को इकट्ठा पड़े तो अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। बस आप इसका भी जवाब दीजिए। बल्कि इसमें तो इसमें एड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे? डज दैट अगेन नॉट अमाउंट टू अ पावर being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ, और साहब टू योर राइट, हम ये भी देखेंगे थ्रू दिस पिटिशन there is an order of this court, the act has been suspended. Whether in presence of that order, full court can be constituted or not. ये भी जरा आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट काउंसिल? फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? मैंने तो प्रपोजिशन कर दी, ठीक है, आप आइए। कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा, आप अपना किस पिटिशन में जरा बता दें। तीनों में ख्वाजा साहब के साथ जी, तीनों में ख्वाजा साहब के साथ। To write of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 में 6 हम बैठे हैं, एक में आप 7 में मेरी हाजिरी होगी। जी चलिए बताइए। Well, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the Parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question. With utmost respect, the primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction. You have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. So, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes... मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास. ठीक है, हम क्यों जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की? ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है, ठीक, मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया, दूसरे वाले में तो बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट. पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे. आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिसडिक्शन में आते, हमारे पास बहुत खुले होते. अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184(3) का इंतखाब किया है. My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. जजमेंट्स हावी नहीं होते हैं आइन पे. अच्छा, 189 पढ़ लें जरा. ये आप लोगों के जरा गलत फहमी क्यों है? 189, एक सेकंड, 189 पढ़ लेते हैं साथ में, जरा पढ़िए 189. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. लफ्ज है all other courts, not the Supreme Court. तो ये हमें हमारे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट्स ना साइड कीजिए. अब आपसे आईनी सवाल पूछा जा रहा है on all other courts, which means high courts and... Unless your lordship allows me to make a submission. Other courts की बात कर रहा हूँ. No, I will not be able. ठीक है, आपको सवाल दे दिया, आप जवाब दीजिए जैसे भी आप करना चाहें. Please, lordship. Please, lordship. It seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. There is also within the Supreme Court and in each High Court
what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full... ये समाज जारी थी, आपने बराह रास्त मुलाहिजा की है पहले अगर इस एक्ट को पढ़ लें हम, ताकि हम सबको पता लग जाए कि इसमें क्या है क्या नहीं. Sir, which rule were you referring? If they want to continue like this, we'll go ahead. But my viewpoint is this. मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ. आपने दरखास्त दी, मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ. आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ. मेरी मर्जी. सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी. मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं. मेरी मर्जी. मैंने इसमें कुछ नहीं कहा. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूँ इस बात से. मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस. एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें. तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी. मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा. इस पे सवाल का जवाब दीजिए. मैं नहीं लगाता हूँ. आपका ये केस फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको. आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं. आपके हाथ पैर कटे हुए हैं. इन्होंने हम पे भी, मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की. मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूँ, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था. वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को. मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके. ठीक है, इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ. ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ. ये भी एक सवाल है. आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है. ठीक है, और हम सब everyone exercise powers as a sacred trust. आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे. तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूँ तो वो तो मैं बिल्कुल, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आप ये पिटिशन लाते, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते. कभी 10 साल पढ़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे. आप खुश थे उस बात से. तो बराए करम आप ये जो बार बार बात कहते हैं ना, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूँ. तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए. अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूँ, बेहतर कर सकेंगे. बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम. अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है. इस पे शुक्रिया. मैंने तो 3-4 जगह कह दिया है कि जहाँ पे 184(3) में आप अपील का राइट दे रहे हैं थ्रू दिस ऑर्डिनरी लॉ, ये हो नहीं सकता, बिकॉज दिस कैन ओनली बी डन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. लफ्ज लिखा है अग्रीव्ड पर्सन. ठीक है, अब देखिए, अब एक मफहूम तो ये निकलता है 184(3) का कि आप ऐसे मामलों में ना उलझाएं अपने आप को जो इनफरादी नौयत के हों. अग्रीड सर. जरा अग्रीड, आपसे अग्री करें या ना करें, मैं जरा बात कर लूं. इनफरादी नौयत की, अगर हम इनफरादी नौयत के केसेस फैसला करने लगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ. रेकोडिक का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ. रेकोडिक का आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया. मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी. हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया. अगर हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूँ फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूँ. ठीक है, अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे. अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की. ठीक है, आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए. इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना है. जी, मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए. मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा. आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें. मैं ये मेरा मकसद ही नहीं है.
آپ anyway, میں یہ آنسر کر دوں گا. یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بریف کر دوں گا, اور وہ دو کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے independence of the judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. So what is your, you have read the law now, اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال خواجہ صاحب ادھر ہوں جی ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ مجھے دیکھتے ہیں نہیں سر آپ اس میں آپ سے صرف اسی سوال چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا, تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں, تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. تو اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک کوشچن اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. حاجی صاحب, to your right. ہم یہ بھی دیکھیں گے through this petition there is an order of this court, the act has been suspended. Whether in presence of that order full court can be constituted or not, یہ بھی ضرور ہے. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم shall we proceed to the next council, پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ آئیے. کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا, آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی, تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. To right of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں, ایک میں ہم بیٹھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم بنا دیا ہے پروسیجر, 14 دن میں ارجنٹ کیس لگاؤ تو ہماری پاور پہ اور انڈیپینڈنس پہ قدغن آ گیا ہے, اس لیے کہ ہم 17 ان الیکٹڈ آدمی جس طرح مرضی عوام کے کیسز فیصلہ کریں, لیکن عوام جو پارلیمنٹ کے تھرو ہمیں بتائے وہ ہمارے راستے میں راستہ آ گیا. 55 انٹری, سارا سوال انٹری 55 کا ہے. انٹری 55 میں سپلیمنٹل پاورز دے سکتے, اس میں بتائیے کہ کیا غلطی ہے. صرف اتنا سا سوال ہے. If your lordship allow me a breather, I will answer all these questions. بسم اللہ کیجئے. My lord, I would answer all these questions. سانس لینے سے پہلے ایک سوال اور نوٹ کر لیں. دیکھیں, کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف دی سپریم کورٹ. نو ویئر اٹ از مینشن دیٹ سپریمیسی اور انڈیپینڈنس آف دی چیف جسٹس. I would answer this question. سر مجھے لگتا ہے سارے میرے کولیگ میرے خلاف ہو گئے ہیں. کوشچن پورا نہیں ہوا. تو کانسٹیٹیوشن سیز انڈیپینڈنس آف دی سپریم کورٹ, جبکہ رولز کے تحت چیف جسٹس کو پاور دیا. چینج کر دیں سر, ایک منٹ, رول کو چینج کیجیے. سن لینا سر, رول کے تحت. اب رول کیا ہوں گے اگر آپ 191 پڑھیں گے, آپ وہ رول بنائیں گے جو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے تابع ہے. جناب کہ رول اسٹرگل سر یہ ہو رہی ہے مائی لارڈ کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس بہت برا ہوا ہے پچھلے ادوار میں. اچھا, اس کی I don't want to comment on that. It is not my stature. It is not my function. اس کی کہیں اور ممالک میں بات سنیں پلیز, اس کی کہیں مثالیں موجود ہیں کسی اور ملک میں, کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں؟ میں اس طرف آؤں گا اگر آپ مجھے what the theme appears to be. میں اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اجازت دے دیں اور آغاز کیجئے. شکریہ. Just one question. آپ صرف اتنا بتا دیجیے, why 184(3? Why not 199 before the High Court? کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے your lordships in a number of judgment have held. ججمنٹ تو بالکل صحیح ہوتی ہیں سر. دیکھیے آپ کو بتاتا رہا ہوں, I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed.
And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. You can't just say it, it is. You tell us which one, we'll note it. یہ آپ مانتے ہیں بیکاز آف جو پیچھے پاس میں 2 ڈیکیڈز میں ہوا ہے اس طرح کی ریفارمز آنی چاہیے تھیں 100%. 100. ایک سیکنڈ اب یہ اب لیٹ اس جسٹ اس کو چھوٹا کر دیتے. اب آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا بنا ہے لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا. ہم ان الیکٹڈ ججز جو ہیں 15 ہم بیٹھ کے یہی چیز کر لیں تو ٹھیک ہوگا. تو پھر تو آپ سمپلی آرٹیکل 191 کے لینگویج پہ آ جائیں, صرف اسی کی انٹرپریٹیشن آپ کو درکار ہے. اس سے معنی یہ ہوا دیر از نو فنڈامنٹل رائٹ. آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا ہے, آپ افیکٹ یہی چیزیں ہونی چاہیے تھی تو ہم خود کر دیتے. صدیقی صاحب یہ سوال لکھ کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہم تو بولی جا رہے ہیں, آپ ہاں کری جا رہے ہیں. ساتھی کھڑے یہ کوئی کام نہیں کریں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ آرٹیکل 10A آرٹیکل 4 ایسے نہیں کہہ یہ پڑھیے ایک پڑھیے اور بتائیے. I will first read article 4. I will first read article 4. For your starter, actually it is for your starter. آپ یہ whole of the act کو ultra vires یا in any there is any exception. I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ٹھیک ہے چلیں. Mr. Siddiqui. His lordship, article 4. Mr. Siddiqui. Article 4. His lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes. And that has been held by your lordships. It is not my, it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. سوال تو ہمارے سامنے یہ کہ یہ جو قانون ہے یہ تو اور ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں ہمارے سسٹم کو اور عام آدمی کی زندگی آسان کر رہے ہیں. سر دیکھیں میں ایک آپ کو میں اور وضاحت کر دوں. ہم بہت ججمنٹ اورینٹڈ بن گئے. میں نے جو حلف اٹھایا ہے نا, میں نے یہ حلف نہیں اٹھایا ہے. سن تو لیجیے نا پلیز, کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کا پابند ہوں. آپ اس سے مخاطب ہو جائیں نا کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کے تابع ہوں. میں نے حلف اٹھایا میں آئین اور قانون کے تابع ہوں. پلیز میں اپنے حلف کی وائلیشن نہیں کروں گا کہ جی ججمنٹ کو آئین کو تو چھوڑ دیجئے, آئین تو ہم پڑھیں گے نہیں, ججمنٹ پڑھیں گے بیٹھ کر. میں تو آپ ذرا سن لیجئے نا, اس ملک میں کئی بار مارشل لاء بھی لگے ہیں, میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں. آپ سن لیجئے وضاحت سے, ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں, میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ 100 ججمنٹ مجھے پلیس کریں, میں ایک بھی نہیں پڑھوں گا. میں کہوں گا آئین پڑھیے. اگر آئین کے ان اکارڈنس وتھ ہے, یہاں تو یہ چیزیں نہ کریں. ریممبر دی ہسٹری آف پاکستان. ہم لوگ بیٹھ کے ادھر لمبے لمبے آرگیومنٹس کر رہے ہیں. 57,000 کیسز ایکومولیٹ ہو گئے ہیں. تو اگر ایک بہتری پارلیمنٹ سمجھتی ہے, ایک بہتری لائی ہے, آپ فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ پہ. وہ خواجہ صاحب چلے گئے, انہوں نے ایک فنڈامنٹل رائٹ کا تذکرہ نہیں کیا. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ 184(3) پہ آ جائیے, پھر 191 پہ آ جائیے, پھر آرگیومنٹس کریے. بہت برا قانون ہے, مگر اس کے دائرے میں لائیے. I proceed. Article 4. I read, my lord. To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the... Not go on to do, develop an argument. Allow me. No, why have you read Article 4?
Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My Lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your Lordship. क्या साहब जरा प्लीज एक चीज क्लियर कर दें, आप मानते हैं कि ये बेहतरीन कानून यही होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था 191 में, यही प्रोपोजिशन। अब इसको जिस तरह माय लॉर्ड कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें, 191 पढ़ ले, उसमें अगर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है और सुप्रीम कोर्ट में है, शेल नहीं है, इट इज नॉट द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इतना बता दें कि जो सब्जेक्ट लॉ है, क्या वो रूल्स, उनका स्टेटस उस पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से हायर है या लोअर है? दैट्स द ओनली। थैंक यू माय लॉर्ड, आई एम इंडेटेड टू माय लॉर्ड। दिस इज द प्रोपोजिशन। एक आर्टिकल 4 आप कह रहे हैं, दूसरा कौन सा आर्टिकल है वो पढ़ लीजिए ना, सारे आर्टिकल इसके ऊपर आ जाए ना फिर आप। आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10 पढ़िए। आर्टिकल 10, सॉरी माय लॉर्ड, 9। ऐसे नहीं नंबर्स ना दें, बताएं ना। No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law। आपकी कौन सी लाइफ लिबर्टी ले ली इस लॉ ने? सर हमारे चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप कर रहे हैं। तो मैं जानूं और पार्लियामेंट जाने आपका क्या ताल्लुक है? No sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to, I'm going to persuade your lordship this is not a constitutional। तो बहुत ही नोबल आर्गुमेंट है। बड़ा जबरदस्त बहस की कि हमारे चीफ जस्टिस की पावर ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आर्टिकल 9 इफेक्ट हो गया। Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the मैं वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने आपको अपना वकील नहीं किया था। शुक्रिया। लोग ये ना समझ बैठे कि आप मेरी वकालत कर रहे हैं। I have to assist you the way the law in this country is developed। चलते आगे ना। देखिए साहब, एक चीफ जस्टिस आपके नहीं है, इस कौम के हैं और कौम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को ऐसे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे होना चाहिए। आपने बताया आइन को भी देख लेना पहले। आइन तो कहते आइन के देखे बगैर, आइन तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा सब कुछ। सर दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप तो कहते हैं चीफ जस्टिस। नो आई से आप अभी तक ये डिफरेंस नहीं क्लियर। नो आई एम, अभी आप अलाउ करेंगे प्रोसीड करने तो करो। सब इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ना बड़े एक 4 हो गया, 9 कौन सी इन्फोर्समेंट करना 9 के बाद 10 में क्या है? 10 में कौन सा है? नो, ये तो no person who is arrested shall be detained। क्या ताल्लुक है इस बात से हमारी? सर मुझे आप प्लीज नहीं ये नहीं आपके, मैं सुबह से शिक 1 से शिक 260 तक पढ़ूंगा नहीं, सॉरी, ये जो हमारा टाइम है ना, इस पब्लिक मनी, ठीक है? आप ये नहीं कहेंगे मैं जो मर्जी आर्ग्यू करूं, आप उसकी हमें रेलेवेंस, सॉरी ऐसे नहीं आर्ग्यूमेंट्स होंगे। साहब मान गए हैं कि ये बेहतरीन कानून है, चीफ जस्टिस के इख्तियार जो कुली थे वो नहीं होने चाहिए थे, देवर उनका इस्तेमाल सही नहीं हुआ। अब उसके बियॉन्ड आप सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार था। बता दीजिएगा। मैं नहीं मान रहा कि ये बहुत अच्छा कानून है, मैं क्या इसका ख्याल बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं कानून आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास कुली इख्तियार हो। मैं नहीं चाहता, आपने दिया रूल्स के अंदर। नहीं ओहो, आप उसको छोड़ दीजिएगा ना। हमने छोड़ दी सर, आपने रूल क्या आपके नजदीक एक शख्स के पास अनफेटेड, अनब्रिडल्ड, अनअकाउंटेबल, अनट्रेमल्ड पावर होनी चाहिए? यहाँ पे द पावर हैज बीन गिवन टू द चीफ जस्टिस एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस। ये बहुत अच्छी बात है सर जो आप कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस साहब को बहुत पावर दे रहा है। लेट अस हैव अ लुक एट आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 तो देख लीजिए सर। एक सेकंड जरा इसका फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं बहस का। सिर्फ हमें पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि 184 में आने से पहले फंडामेंटल राइट्स वाजे कर दें, कौन सा वायलेट हो? लॉर्ड, योर लॉर्डशिप held that when a law is made or election is taken which violates the constitutional scheme, it is a violation of fundamental right। तो स्कीम में कौन सी प्रोविजन बताएं ना सर। मैं आपको, आप मुझे अलाउ करेंगे? दे रहे हैं, इजाजत बताइए। Because the law, the constitution requires under the constitution, and I will read the relevant article to
some breather by your lordships. In the context of the trichotomy of powers, the Parliament will make its own rules, the Executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. This आपने हमने जो आपसे शुरू किया था हकूक की बात, अब वो आपने तर्क कर दी। आपसे मैं तो आप जवाब नहीं, जवाब ना दीजिए प्लीज, आप आर्ग्यू कीजिए, हम आपकी आसानी पैदा कर रहे हैं, बाद में जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि आप देखिए, मैं भी वकील रह चुका हूँ, जब 6-7 सवाल आते हैं बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब आपने पहले जवाब दे दिया था, बिल्कुल कानून सही है। अगर जब माय लॉर्ड ने सवाल दोबारा पूछा, अब आपने ठहर जाइए ना, जैसे विटनेस कहते हैं ना, अगेन सेज, जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सुन लीजिए, आर्ग्यू आप कीजिए, आपका केस है, मगर बताएं बुनियादी हकूक कौन सा सलब हो गया, ये बता दें बस। अगर आप ये अगर को एप्लीकेबल करने के लिए पहले हमें बता दें कि कौन से फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना चाहते हैं जो इनफ्रिंज हुए हैं, तो पहले इस पे आइए, ताकि वाई नॉट 199 यही पावर हाई कोर्ट के पास है, वहां क्यों नहीं गए? सर मैं आपको नोट कर, I am asking your lordship to recognize my fundamental right given in Article 9, 10, 10A. सर मैंने पढ़ा आपके सामने, बस यही आर्गुमेंट आपका। सर मैं पढ़ रहा हूँ आगे, proposition ही डेवलप कर रहे हैं आप। My proposition मुझे आप, my proposition is that the legislature is bound by the scheme of the Constitution, and the Constitution requires that हमने फैसला किया आपसे सवाल नहीं करेंगे। The Constitution requires that the legislature will make its own rules. The Constitution requires petition, ये आपने अभी बात की, मैंने नोट कर लिया। 3 different organs of the state हैं, they will function dependent of one another. One will not make encroachment on the other. तो यहाँ तक पहुँचने में हमने बुनियादी बातें तो पता है ना, आगे बढ़िए ना। It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the Parliament. ठीक, समझ गए। अगला point. And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the Constitution, and if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. और जजमेंट है, आप नोट कर लें। मैं सर जजमेंट पढ़ने में चाहूंगा, दिस सो फंडामेंटल क्वेश्चन, ये देयर आर न्यूमरस जजमेंट्स। ये इस बात का तयन करना जी आपके पास इख्तियार है, जैसे मंसूर शाह साहब ने जिक्र किया कि ये इख्तियार एक्सप्रेस होता है, या तो हम रेफरेंडम करा लें जहाँ हर मार्शल और डिक्टेटर को 98.6% वोट हमेशा मिलते हैं। अच्छा, सुन लीजिए ना जरा, प्लीज तसल्ली रख लें। जी सर, नहीं सुन, या हमें क्या पता लोगों को क्या चाहिए, उसकी अक्कासी उनके नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे करते हैं। ठीक है, जिसको इलेक्ट करें उनकी मर्जी है, वो उसकी अक्कासी करते हैं। हम यहाँ तो कोई पोल अगर हम इधर खड़ कर मैं पूछ लूँ सबसे कौन से इन फेवर ऑफ दिस लॉ है, आपको कौन हक देता है ये करने का? आपको ये देता है कि फंडामेंटल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने बस 8, 9, 10 बस कोई आर्ग्यूमेंट डेवलप कीजिए। हजूर ऐसे नहीं हुआ आर्ग्यूमेंट। योर लॉर्डशिप इम्तियाज साहब एक दफा फिर एक चीज क्लियर कर, अगर ये कानून सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियार को डाइल्यूट करता है, आप समझते हैं कि ये अच्छी चीज है? ऑब्जेक्टिव अच्छा है, प्रोसीजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक सेकंड, इसका मतलब है इससे आपके और पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर राइट ऑफ अपील दिया जा रहा है, वो भी बहुत, उससे वायलेट नहीं हो रहा है, उससे इन्फोर्स हो रहा है। तो अब आइन को मद्देनजर रखेंगे कि नहीं? सुन तो लेना। तो आपका सिर्फ क्वेश्चन ये रह गया है कि जी ये बहुत अच्छी चीज है, आप अनइलेक्टेड जजेस कर ले, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती थी। भले आप रिफ्यूज भी करें, वो फिर भी बेबस है। चले हम आपकी ये भी बात, बेबस नहीं है। एक सेकंड, अब आप बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में
एग्जैक्टली 191 पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब है नो फंडामेंटल राइट्स सर आर मुझे बीइंग अभी तक वायलेटेड। आपने ना आर्टिकल्स दिए हैं ना मुझे सबमिशन करने दिए। बताइए 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 प्लीज बताइए। दिस आर्टिकल 4, 9, 10, 10A फंडामेंटल राइट जो है उसको हम इन्फोर्स करना चाहते हैं। सर वो पढ़िए प्लीज। सर मैंने आपको कहा है कि when due process is not followed in making a legislation by the parliament, forget about the objective. And if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. अब हमें समझ आई आपकी बात। वो ये है कि कानून का ऑब्जेक्टिव तो शायद आम आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर जो अडॉप्ट हुआ है ये हमें बनाना चाहिए था, पार्लियामेंट ने क्यों बना दिया, ये सवाल है। अब ऑब्जेक्ट is not access to justice a fundamental right now recognized as such? Yes, it is. Is not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed, it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset the entire constitutional scheme? It would be unfortunate unless it is done with valid reasons. बात ही नहीं सुन रहे हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, आप जवाब का फिर वही कर रहे हैं। In a system based on the common law UK tradition, is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US constitutional law is not written in the US Constitution. Sitting as a full court, each time a full court is constituted, is that like a tabula rasa, blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution. That independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of speaking for myself, but putting it as a question to you of whether it is the Chief Justice or the 3-member committee. Who is Parliament to say it's a 3-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? Why shouldn't it be a 7-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. That is, they are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say, no, judges is okay with us. 5 judges is too much. 1 judge is too little. These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today, Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section 4. Tomorrow, Parliament says, "Ji, ek law bana deti hai, ji. I don't know, family matters are to be heard by bench of 9 and 7 judges." Is that part of access to justice? Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना वो बना हुआ है, वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं लिखा था, राइट दे दिया, पेनम्बरा में आ गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखिए उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है, वरना नहीं लिखा, और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है। Is this the state of the law in Pakistan? It is not. Is this the state of the law in terms of even full court judgments? But
as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution. Question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? Need, my lord, with respect, अगर देखें सिद्दीकी साहब, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ। आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें, आप सवाल नोट कर लीजिए, आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाहते, फिर आप कल आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके। आप चलें थोड़ा बढ़ा लें आगे बात को। With great respect to my brother, independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. So, अच्छा लॉ है। इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके to achieve certain outcomes in cases and by constituting benches, that is a complete erosion of independent judiciary. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, dunya bhar mein, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं, चीफ जस्टिस नहीं बनाता। और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है तो वो शायद इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या बैलेट होता है या रेफल। कंट्रीज लाइक नेपाल, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर पहले बैलेट होता है कि बेंचेस कैसे होंगी। चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं कि केस आज आया है और कल मैं अपनी मर्जी का एक बेंच बना दूं इस केस को सुनने का, जिसको मर्जी में बिठा दूं। ये चीजें, तो ये सारा कानून जो है ये वाजे कर रहे हैं इन चीजों को, इंडिपेंडेंस को तो बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स की बात की जा रही है, आपकी जजमेंट अपनी है। जवाब दे रहे हैं, आप दलाइल नहीं देना चाहते हैं, आप जवाब ना दें, दलाइल दे दें। आप इस तरह कीजिए कि आप अपने दलाइल एस्पेक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। वर्ड आर्टिकल 191 में लफ्ज़ लॉ लिखा है, whereas for example in relation to the review jurisdiction उसमें act of parliament लिखा है। It seems to me that even now if you go to the literal text of the constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is again in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judge-made law or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, there's a question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal, because both are incorporated in law. The question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice, the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law, co-equal, so can Parliament make, in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law overriding, in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. Look at Article 191. Perhaps it is unconstitutional. जैसा फिर अगर आपको कोई दलाइल नहीं देना है, और नहीं सुन लीजिए ना, आप तो हर के जवाब ही दे रहे हैं, आप अपनी पिटिशन तो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। आप कोई दलाइल, आप दलाइल देके खत्म कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे आखिर में,
ہمارے ذہنوں میں ہوں گے, ٹھیک ہے, یا ہم اپنے ججمنٹس میں لکھ دیں گے, May I ہر proceed? جج اپنی رائے لکھ دے گا May I اپنی مرضی سے. آپ پلیز اپنے دلائل دیجیے. May I proceed on جی پلیز. I'll only make one observation. It is settled law by law that the Parliament has the power to make our judgments ineffective. And this is a precedent which is embedded in our constitution. if they are lawfully empowered, if the Parliament is lawfully empowered, not otherwise. پھر آپ بحث کرنے لگے. آپ سن تو لیجئے نا بات کو, پھر آپ نوٹ کر لیں بھائی, آپ آرگیومنٹس ہوتے ہیں, آپ جج نہیں ہیں, آپ ہر چیز کا ایسے جواب دے رہے ہیں. May I proceed? پلیز ڈو سو. آپ چلیں شروع کیجئے, بسم اللہ کیجئے. My learned brother asked you, surely that rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the Constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled. Yes. دیکھیے صاحب ذرا ایک کوشچن, آپ کا کہنا یہ ہے کہ 3 ممبرز اگر بیٹھ کے بینچز بنائیں گے ایز پر دس لا تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کے خلاف ہے. تو کیا ہم 17 ججز بیٹھ کر جب رول بنائیں گے, ہم کوئی ایسا رول بنا سکتے ہیں جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو لے کے ایک شخص کے حوالے کر دے, یا ایسا رول بنائیں جو کانسٹیٹیوشن کے, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ سر کر تو سکتے ہیں آپ نے, اگر ایک بندے کو انلمیٹڈ پاورز ہیں. My lord, جسٹ ون میں آئی ریکویسٹ مائی بردرس, ان کو بحث تو کرنے دیجئے, ہم سب سوال بعد میں کر لیں گے. آپ پلیز اپنے حساب سے اپنے آرگو کیجئے. Mr. Siddiqui, if I may just add, it is not a question of یہ law غلط ہے یا یہ law برا ہے یا اچھا ہے. The fundamental question here is of competence. Yes. Who is competent to make whatever it may be called the rules of the law? If یہ تو آپ نے آرگیو ہی نہیں کیا ابھی تک. سر میں یہ تو کہہ رہا ہوں, آپ ہمیں روکیں, آپ کہیں مجھے آرگیومنٹ سن لیجیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کمپیٹنس نہیں ہے پارلیمنٹ. آپ بتائیں نا ہمیں, شک دیں قائرین کی. ڈائریکٹر سی پہ آ جائیں, میرے خیال اسی پہ آ جائے, یہی سوال ہے. دیکھیے میں آپ دیکھیں, آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, وکیل ہیں, یقیناً ہم لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے آپ ذرا سن لیجیے نا 2 منٹ. جی وہ ہم اپنے, اگر ہم ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کریں گے, الگ الگ رائے لکھ دیں گے, ٹھیک ہے. میرے حساب سے مناسب نہیں ہے کہ ہم سوال کے طور پہ اپنی رائے آپ کو دیں اور پھر کوئی ہم دوسرا جواب دیں. ہم صرف سوال پوچھ رہیں گے آپ سے, آخر میں آپ اپنے دلائل دے دیجیے, ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. ہمیں پسند نہیں آئے تو پھر ہم سوال, اتنے پسند آئے شاید سوال ہی نہ پوچھیں, نہیں پسند آئے 2-4 سوال پوچھ لیں گے. اب آپ بسم اللہ کیجیے. جی Lord, the concept of trichotomy of power is a concept well known to your lordships. The Constitution, what are those provisions which relate to the trichotomy of power, and let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. Article 176. جی پڑھیے. Article 176 says, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan, and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, Parliament, or until so determined as may be fixed by the President. What this article says is that one of the first steps in the appointment of the Chief Justice is the centrifugal force, is the linchpin, and once he is appointed and the rest of these members are not appointed, the Supreme Court will be there. And then the judges will be appointed. Please chaliye na, don't state the obvious, it's written there. This is really, no, sorry to say,
आपको पता है अवाम कितनी पैसे खर्च कर रही है? सर मैं आप ऐसी बातें तो ना करें हजूर। सर आप मुझे आर्ग्यू, आप एक तरफ कहते हैं आर्ग्यू करें, दूसरी तरफ आप मुझे आप कह रहे हैं ये आपने पढ़ लिया। आई एम इंटरप्रेटिंग, आई एम जस्ट थिंकिंग interpretation of the obvious. Supreme Court comprises of Chief Justice and Judges of the Supreme Court. Obvious. No, it's not. It is not. I am giving you, your lordship, a circumstance that let us assume, to understand the dynamic of Article 176, that assume there is a Chief Justice and there is no other judge. The question is, will the Supreme Court come into existence? The answer is yes. I will not answer your question. We are not here. We are not here in a theoretical realm. Please don't. No, now this is not fair. We are not here in a theoretical realm to discuss what may or may not happen. We are faced with a particular law. You challenge that law. Argue that case. Let us proceed further. Let us go to Article 87. Article 87 relates to the Parliament and the Senate. Each house shall have a separate secretariat. This provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both the houses. Sub-Article 2, Majlis Shura Parliament may by law regulate the recruitment and condition of service of person appointed to the secretarial staff of either house. Until provision 3, until provision is made by Majlis Shura under clause 2, the Speaker, or as the case may be, the Chairman may with the approval of the President make rules regulating the recruitment and conditions of service of person appointed to the Secretarial Staff of the National Assembly or Senate. So this is the rule-making power. Let's go to Article 67. I will not allow it, and I might even start imposing costs. Let's go here, let's go there. What's the relevance of Article 187? Don't do this. Sorry, please don't do this. Please don't do this. It shows that the Parliament as a separate organ of the state, profound, has the power to make rules for its internal working. And this is the theme which is contained in Article 67. No, ये rules सिर्फ बनाएंगे किसके लिए? Secretariat हमने तो नहीं बनाए लिए. Appointment के लिए, recruitment के लिए, और उसके लिए तीन चीजें लिखी हुई हैं सर। मैं आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का अलग सेट ऑफ रूल्स है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, और ये रूल्स जो हैं ये आप सुप्रीम कोर्ट वाले पे आ जाइए ना। हम पार्लियामेंट के रूल्स जब वो चैलेंज करेंगे ना आप कि उन्होंने गलत बनाए वो देख लेंगे। अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 191, उसकी तशरीह कर दें, खत्म। Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now, the law is a word which is different from the act of the Parliament. It may... Law is different from act of Parliament? Yes, it is. Law is this is something I've never heard before. Yes, sir. May allow me to assist you. Law encompasses a lot of other things than the act of the Parliament. Law includes with it itself usage having the force of law. Refer to Article 8. In the same sentence, the Parliament Ain has used Constitution, law, and rules. And please, I'm not going to expect this kind of argument for the Supreme Court. Sorry, this is not on. I'm giving your lordship extraordinarily good argument. If your lordship is inclined to ridicule me like that, I will not pay. I will withdraw from the case. I don't allow this. Please, that's your choice. Your lordship has constantly thwarted my arguments again and again. Have a patience to hear my arguments. ये बताइए जो बेचारे लोग जेल में पड़े हुए हैं ना, छोड़ेंगे नहीं हम। मैं बचा रहा हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। हाँ नहीं, मैं भी नीचे से केसेस कौन फैसला करेगा? एक चीज होती है अमेरिकन आइन में, वो लोग करते हैं क्या होता है, फिलिबस्टरिंग,
कि जी चलते रहो। अगर आप समझ ही रहे हैं कि इस तरह से मैं ऐसा कर ही नहीं रहा। अब आप अभी आपने मुझे अब आप बोलने आपको हम सुनते हैं मगर आप हमारी बात को सुनना पसंद नहीं फरमाते हैं। तो ये देखिए बात आधे घंटे से सुन रहा हूँ। चलें। If I've got you correctly, if I've got you saying that law is not only the act of the parliament, because there are rules of 1980. If there were no rules, fine, they could have enacted that law. Because they have the rules of 1980, so that's why they were not empowered to pass any law which was contrary to it. I would not go to that extent. Assume there are no rules. The question is whether the parliament can frame this law or not is a question which probably is not free from doubt. I would still say the parliament can't do it. The rules are imperative. If your lordship would look at Article 8, if your lordship would look at Article 8. इम्तियाज साहब, सर, ये सिंपल हो गया है. आप ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन लॉ जो इस्तेमाल हुआ है, this excludes an enactment of the parliament. No, my lord, I am not saying this at all. I say law has a larger composition than the act of the parliament. We are, at this moment, we are only concerned with an act of the parliament. Your lordship has asked me a question, what is the scope of the word law? Yes, and I am trying to assist your lordships. In this case, it's not relevant because the law has already come. My lord, I am saying that this law, your lordship's assumption is that since the word law has been used in Article 191, therefore the Parliament can make this law. I am trying to show to your lordship it is not the case. I'll take you back to my original question, His lordship. where under a constitutional power, this court has framed rules. Do they stand on a higher footing than ordinary legislation? Yes, my lord, there are judgments to that effect rendered by your lordships. Can I ask a question as well? When the Constitution makes a distinction in different articles using the Act of Parliament and using the word law, so how do you see that distinction? So, for example, in 191, they could have said subject to the Constitution and Act of Parliament, but instead of saying that, they've used the word subject to the Constitution and the law. There are other provisions of the Constitution which don't use the word law, but use the word Act of Parliament. So there is a clear difference between an Act of Parliament and the word law. So what do you understand by the word law? Because this provision of making rules is subject to the Constitution and the law. The framers of the Constitution were conscious of the distinction between an Act of the Parliament and the law. Well, while they envisaged that law includes judge-made law and other variations of the law, Act of Parliament was specifically used in a particular sense. And they can't be used interchangeably. And whether this enactment, Act of Parliament, cannot be considered as law? My lord, not a law? In ordinary parlance, there may be impression. No, I'm talking specifically about this. Within the context of Article 199, this is not law. It is the Constitution and law. It would mean law in a broader context. And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Usage or customary practice having the force of law in terms of Article 8. And judge-made law, the judicial precedents which your lordships have given time to time to the people of Pakistan to show to them what law is. I got your point. You say that every usage, custom can be considered as law, but cannot be considered as act of the parliament. Yes. Whereas act of the can be considered as act of the parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the context in which the word law has been used in the physiology of Article 191 manifests that this is not an ordinary act of parliament. It means the law which has been rendered from time to time in the form of judgments of the superior court. Do you think, or are you arguing
that it is the exclusive power of this court under Article 191 to make rules. Absolutely. And those rules, once that power has been exercised, whether by specifically making rules or through law, that is judge-made law, ordinary legislation cannot override that, because there is no legislative competence to do that in terms of item 51. That is precisely my argument. I will go a step further. Before you do that, it's very interesting. I was just calling the equivalent provision in the Indian Constitution is Article 145, relating to the rules of the Supreme Court. Now, this has very interesting language. It is subject to the provisions of any law made by Parliament. Yes. The Supreme Court may, from time to time, with the approval of the President, make rules, etc. So here, in relation to law, they are clarifying it is statute law made by Parliament. Whereas in our case, it is just law. So the rules, the law includes any decision of the court which sets out the practice and procedure of the court. And to that extent, statute law cannot override it, cannot supplant it, cannot whittle it down, until the court itself revisits that law on the judicial side. It cannot even be done by the full court sitting on the administrative side. We go back, because there is a certain equivalence between what the court can do on the administrative side to make its rules, and what Parliament can do maybe in terms of statute law. But it seems to be that use of, speaking for myself, the use of the word law includes case law or judge-made law. Even the full court on the administrative side cannot overrule that. So this rule, which is supposedly overruled by sections 2 and 3, master of the roster, that is judge-made law. And therefore, even the full court sitting on the administrative side can't do it unless the court revisits that principle on the judicial side. Imtiaz Sahab, how will we read into this provision 191? It's a constitutional provision. We'll have to read into it that the law only means judgment law. फिर अगर आपका आर्ग्यूमेंट ले लिया जाए तो इस law expression say enactment is excluded, but even a usage or a custom override a rule made by all of us? My Lord, my submission is as follows. Allow me just follow your Lordship's conclusion. My Lord, the Constitution as I read it, and I make submission with respect to your Lordships, the Supreme Court of Pakistan has held that notwithstanding the rules and the rules which are framed under the constitutional scheme, they are on a higher pedestal than ordinary law. Even conventions which have been judicially recognized by the superior courts are constitution by themselves, and the Parliament cannot encroach upon them. This is next point. पहले इस fundamental उसको clear कर दें. Do we have to read into the expression law that it is only confined to the judgments of this court and the precedent? Your Lordship will appreciate the contours of the word law, which has been used with reference to the Constitution in terms of Article 181 and the scope of that word. And if your Lordships come to the conclusion that this includes the case law rendered by the Superior Court, the Superior Courts have said that even conventions, if they are proven before the court in the constitutional domain, they are the Constitution themselves and violation cannot take place. ये जो लॉ है आपके ख्याल में 191 में नहीं आता, ये किस कैटेगरी का लॉ है? ये कैटेगरी सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये आते ही नहीं है. In which category you will fall this law, because you this is act of the Parliament 191. The definition of law is something else which you are trying to. This is an act of the Parliament. It comes out of the
Theme of the word law, and there are other sources How of it law. is out of the word scheme of law? What is your argument on this point? My argument is that to isolate the word law with reference to Act of Parliament alone. What about Article 140 and 141? There is also the word law has been Yes, used. what I'm saying this is that Article 141 and 142 to Article of मैं आपको एक अफ्रीका पे छोड़ देता हूँ. आपने दरखास्त Introducing the new and bigger higher twin inverter plus ASPE star. सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी. मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी. मैंने इसमें कुछ नहीं कहा. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूँ इस बात से. मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस. एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें. तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी. मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा. इस पे सवाल का जवाब दीजिए. मैं नहीं लगाता हूँ. आपका ये केस फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको. आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं. आपके हाथ पैर कटे हुए हैं. इन्होंने हम पे भी मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की. मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूँ, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था. वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को. मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है. इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ. ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ. ये भी एक सवाल है. आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है. और हम सब everyone exercise powers as a sacred trust. आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे. तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूँ तो वो तो मैं बिल्कुल मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आप ये पिटिशन लाते, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते. कभी 10 साल पढ़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे. आप खुश थे उस बात से. तो बराए करम आप ये जो बार बार बात कहते हैं ना, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूँ. तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए. अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूँ, बेहतर कर सकेंगे. बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम. अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है. इस पर शुक्रिया. मैंने तो 3-4 जगह कह दिया है कि जहाँ पे 184(3) में आप अपील का राइट दे रहे हैं थ्रू दिस ऑर्डिनरी लॉ, ये हो नहीं सकता, बिकॉज दिस कैन ओनली बी डन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. लफ्ज लिखा है अग्रीव्ड पर्सन, ठीक है. अब देखिए, अब एक मफहूम तो ये निकलता है 184(3) का कि आप ऐसे मामलों में ना उलझाएं अपने आप को जो इनफरादी नौयत के हों. अग्रीड सर. जरा अग्रीड आपसे अग्री करें या ना करें, मैं जरा बात कर लूं. इनफरादी नौयत की, अगर हम इनफरादी नौयत के केसेस फैसला करने लगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ. रेकोडिक का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ. रेकोडिक का आ गया, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया. मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी. हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया. अगर हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूँ फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूँ, ठीक है. अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे. अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की, ठीक है. आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए. इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना है. जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए. मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा. आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें. मैं ये मेरा मकसद ही नहीं है. आप anyway, मैं ये आंसर कर दूंगा. ये बिल्कुल 184(3) के जो कंडीशंस हैं वो भी मैं आपके सामने पूरी कर दूंगा. और वो 2 कंडीशंस हैं,
public importance and करिए ना, fundamental कर rights. दूंगा नहीं, और करिए। fundamental rights में जी rightly cited. अगर we can go back, Independence of the Raja Sahab, judiciary is a fundamental right. can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter, then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. So what is your, you have read the law now, इसके ऊपर आप बता दें कि और इसमें इसी के साथ एक सवाल ख्वाहिश साहब इधर हूँ जी, जरा 5 मिनट लगते हैं आप मुझे देखते नहीं सर, आप उसमें मैं आपसे सिर्फ इसी सवाल चलते हैं कि इस 4 में लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस का बेंच बना सकते हैं ना, तो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं ना 4 में, तो फिर 4 को 5 को इकट्ठा पढ़े तो अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। बस आप इसका भी जवाब दीजिए। बल्कि इसमें तो इसमें एड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे, जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे? डज दैट अगेन नॉट अमाउंट टू अ पावर being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ। अजय साहब, to your right. हम ये भी देखेंगे through this petition there is an order of this court, the act has been suspended, whether in presence of that order full court can be constituted or not, ये भी जरा आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट काउंसिल, फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? ठीक है, आप आइए, कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा, आप अपना किस पिटीशन में अगर बता दें। तीनों में ख्वाजा साहब के साथ जी, तीनों में ख्वाजा साहब के साथ। टू राइट ऑफ 2 काउंसिल इज नॉट अलाउड अनलेस यू आर सेपरेट पिटिशनर्स। 7 में 6 हम बैठे हैं, एक में आप 7 मेरी हाजिरी होगी। चलिए बताइए। My lord, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. My lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments, I'm talking about arguments. I am making submission, my lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes... मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास. ठीक है, हम क्यों जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की? ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है, ठीक, मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें 2 चीजें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया है, दूसरे वाले में तो आप बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट. पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे. आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन में आते, हमारे पास बहुत खुले होते. अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184(3) का इंतखाब किया है. My lord, there are number of judgments of the Supreme Court. जजमेंट्स हावी नहीं होते हैं आइन पे. अच्छा, 189 पढ़ लें जरा, ये आप लोगों के जरा गलत फहमी क्यों है? 189, एक सेकंड, 189 पढ़ लेते हैं साथ में, जरा पढ़िए 189.
a law, an ordinary law, and the Parliament changes that law, nobody has stopped them from doing that. With retrospective. Yes. The distinction here is that here the rules which have been framed in 1980 in exercise of powers under 191, Article 191 of the Constitution. They are not interpreting any ordinary law which can be changed by ordinary legislation. This is what my submission is, the same issue. That is the... This power has been exercised under the Constitution, and it says so specifically in exercise of powers under Article 191 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court makes the following rules. So it's not that there is one ordinary legislation which is interpreted by the Supreme Court and the Parliament says, well, we want to change the law, they can change the law. Because they had made the law, they can change it. Likewise, if the Supreme Court has made the rules and the Supreme Court decides to change them, so be it. That's the precise solution I'm trying to make. With the doctrine of separation of and trichotomy of powers. It's as simple as that. My Lord, an event arose when my Lord the Chief Justice the benches were reshuffled. And a judgment argue kariye apna case. And aap apna case argue kariye. My case has been allow me to give your lordship a judgment on the issue. आप कितना वक्त और लेंगे? 15 मिनट और दे दूंगा अगर क्वेश्चंस ना हो तो। ठीक। Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161. Alak Asad Ali case. PLD? Alak Asad Ali Federation of Pakistan. This is page? This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. The question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan. And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established has the same binding effect as a constitution. I don't want to read the rest of the paragraph. Your lordship has already said. So now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made because there's a convention, the Chief Justice, upon the don't interrupt till I finish the question. Upon retirement of the Chief Justice, have I understood you correctly? No, madam. Your lordship is not. Then your lordship will have to read the judgment. That judgment says that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there is a convention and there is a past practice. And elaborate arguments have been given. And it is convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justice. So it becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the बात हो रही ना असूल की बात हो रही ना असूल वो है जो मेरे लिए जो जजमेंट में है आप खुद आप बता देंगे जो असूल उसके मुताबिक चलेंगे जी सर आगे बढ़िए सिमिलरली your lordship held that these rules of the Supreme Court are on a higher pedestal than the ordinary law and the judgment है my lord 2010, my lord. Why the rules are at higher pedestal? Why? Because these rules they have been made
by a constitutional body and subject to law. Subject to law की बात साइटेशन तो दे देना 2010 2010 सर मैं भी दे रहा हूँ इम्तियाज साहब सर दे दे मैं तक पढ़ लेता हूँ आप बता दें This is a constitutional body and the Parliament Majlis-e-Shura, that is not, which has the exclusive power to make laws. इस जजमेंट में आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें सर? इस जजमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं, कहाँ किस पेज पे किस पैराग्राफ में? The relevant page is page 535 and it goes on to page, नहीं हमें रेलेवेंट पढ़ दीजिए 535 कहाँ लिखा है ये? It goes on to page 536. The Supreme Court rules. देखना पसंद करेंगे सर किताब? The Supreme Court rules. पेज क्या होता है? पेज क्या है? Page Supreme Court rules are on higher pedestrian promulgated on the basis of mandate given by the Constitution and not by the government. हाँ, so how does it say it's higher than a law? वो कहाँ लिखा है? The Supreme Court rules on a higher pedestal and promulgated on the basis of mandate by the Constitution and not by the government. Objective thereof is to enhance the power of review as conferred by the Supreme Court rules and Supreme Court under Article 180 of the Constitution. अच्छा इसमें दो बुनियादी बात हैं जो आप कह रहे थे उसके बरक्स है और दूसरी बात है whereof was to enhance the power of review. सर तो ये तो enhance कर दिया था power of review ने. सर ये क्या है? ये लॉ का तो नहीं इसमें जिक्र, शायद कहीं और हो मुझे नहीं पता. सर इसी जजमेंट को पढ़ें अगर आप डिटेल में, कहने मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ. इसमें नहीं ये काम नहीं होता है वकील का. वकील का काम होता है निशानदेही करे फलां सफ़े पे इस पैराग्राफ में. ये नहीं कि मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ. हमें डराए नहीं, आप सिर्फ वजाहत कर दें. मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ. पेज बता दीजिए प्लीज. सिर्फ पेज बता दें, हम पढ़ लेंगे खुद. इस पे ये बात नहीं लिखी है जो आप कह रहे हैं. इस पे 536. हाँ ये मैंने पढ़ ली. चलें अगला बताइए केस. PLD 1997 Supreme Court 426. अच्छा इस केस में लॉर्ड. PLD 1997 Supreme Court 426. जी सफा 511 page 511 511. Page 511 511. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be that Article A will apply to all laws made by the Majlis-e-Shura Parliament, be it or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with the proposition and still dismiss your petition. No, I'm just saying. So I don't know there is anything clincher here in your favor. It says these are inbuilt limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. इससे पहला बात है separation of executive is undermined. यहाँ तो parliamentary बात है ना, legislation. Look at PLD 1979 Supreme Court 49. एक सेकंड दूसरा बता रहे हैं PLD 1979 Supreme Court 49 Supreme Court. PLD 1973 Supreme Court 49. Diablo Man's case.
73, 79. 73. My Lord, PLD 1973, Supreme Court 49. Relevant page? Relevant page is 68. 68. Then it is from 68 to 70, my Lord. To 70. ठीक. And इसी proposition पे. His Lordship, Parliament, no law can be made compromising power of judiciary. ठीक. Paragraph page 70 पे मैं जरा पढ़ना चाहूँगा सर, अगर इजाज़त दें. Valid, bro? Valid? ये आपने कहा यही proposition. जी सर. हम पढ़ लेंगे, आप पढ़ना चाहते पढ़ लें. पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए प्लीज. My Lord, page 70. Exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare declare what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. होती है. Yes. लेकिन कहाँ पे है? It is an enabling provision. How it is applicable here? ठीक. My Lord, और कोई केस? it says, और केस? PLD 1998 Supreme Court 161 में sir, independence judiciary is a fundamental right. Page क्या बता दे? Supreme Court. Page 161. 161. 98 Supreme Court. His Lordship. Relevant. Relevant is page 189. जी. 247. यही बात है अलग. Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus standi, page 191. Constitutional convention as good as constitution. Any deviation amounts to deviation from the Constitution. 321, page 331. Certain questions have been asked and I wish to respond to them. अगर मैं आपके लिए आसान करूं, अगर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, आपके सवाल हम सुनेंगे वापस, ठीक है? तो वो उनकी तरफ से कुछ एंग्जाइटी थी कि शायद उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो वक्त बचाने के लिए आप उनके भी बात को साथ साथ कवर कर लीजिएगा, भी कवर कर लीजिएगा. अगर आप ये माकूल तरीक़ेकार समझते हैं, वो फिर चले जाएंगे. फिर आपकी एक जजमेंट पढ़ना चाह रहा था. नहीं, वो आप पढ़ लीजिएगा. अगर अभी क्योंकि कहा हुआ है कि बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती. नहीं, ठीक है, आपने कहा डिपेंडिंग ऑन रूल. हो सकता है गलत कहा हो, गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, वो बात अलग है. अगर हम जरा अटॉर्नी जनरल को अगर आप लोग अग्री करें शॉर्ट ब्रेक करने के बाद, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आपको कहीं जाना है, एक सेकंड, इनके भी हम आपको फिर देंगे हियरिंग. ये नहीं समझें कि आपको हम बंद सर. आई एम डन. मैं एक आपको कहीं जाना है? My Lord, there is a hearing scheduled in Vienna on Indus Waters Treaty for 3 days starting tomorrow. So I have to fly out tonight. Tomorrow. How long will you take? My Lord, today, sir, my submissions will be precise. I have already filed my written submissions. It will take 30 minutes. And then whatever questions at the end my lords may have, I will respond to them and might furnish a response in writing as well. So I have already filed my written brief. I'll take 30 minutes. The clock. There's vast right of audiences with the Attorney General. Have you raised any primary legal objections to maintainability or not? Yes, my lord, I have a. I think we'll take a short break. My lord. आप
ٹھیک ہے آپ اگری کرتے ہیں؟ نہیں یہ آپ ان کی بھی باتیں سن لیجیے. Do I have a choice? I don't have a choice. No, I don't have a choice. You have it. You're most kind. If you agree with me, I'll be obliged. It's a rare But we will hear you. My lord, it's a rare moment during these proceedings that I agree with your lordship. نہیں آپ نے بڑے Otherwise, from morning I have not been agreeing with your lordship. تو آپ ہم ابھی we'll come back at 3 or 10 to 3 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں 3 o'clock کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ ابھی ذرا پوائنٹس بھی نوٹ کرتے جائیں, سوالوں کے جواب اگر پھر آپ کو سنیں گے یہ نہ سمجھیں گے. I have just one request. مگر نہیں Your lordship will give him as similar tough time as your lordship has given me. No, I will try not to interrupt him because again I'll tell you why. He's representing Pakistan. Interest of the country is paramount. The Indus Water Treaty is a very sensitive thing. So we don't want to create a situation where he can't go. I will request my colleagues and I will also restrain myself. If we have queries, like he said, do you have some additional or someone here? Amir Rahman is a competent additional Advocate General. So he will make note of the questions and he will either respond himself or the Attorney General can even call him from, I don't know, wherever he is. ٹھیک ہے تو ان کو ذرا ہم فارغ کر دیں, پھر ہم ذرا تسلی ہو جائے گی, ان کو بھی تسلی ہو جائے گی. شکریہ بہت بہت. میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے میری مرضی, میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی, میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے میری مرضی پہ چلے گا, اس پہ سوال کا جواب دیجیے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی, میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے. ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پاور تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے, اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سب ایوری ون ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ پٹیشن لاتے, سپوز میں چیف جسٹس ہوتا, میں اس کو لگاتے ہی نہیں, تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے. کبھی 10 سال پڑا رہتا, میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ. آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بار بات کہتے ہیں نا, میری ذائع, میری مرضی, میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں. تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں, مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں می, مائی سیلف اینڈ آئی آر the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے, وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے, یہ شک کہ آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا, یہ ہو نہیں سکتا because this can only be done by a constitutional amendment. یہ لفظ لکھا ہے aggrieved person. ٹھیک ہے, اب دیکھیے, اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر, ذرا اگریڈ, آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں انفرادی نوعیت کی. اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکوڈک کا آ گیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا.
मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। अगर ये हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूँ फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना आए। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए, मैं अब वजाहत कर दूं। अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें। मैं ये मेरा मकसद ही नहीं है। आप एनीवे मैं ये आंसर कर दूंगा। ये बिल्कुल 184(3) के जो कंडीशंस हैं वो भी मैं आपके सामने पूरी कर दूंगा, और वो दो कंडीशंस हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जी राइटली साइड से independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is your, you have read the law now, इसके ऊपर आप बता दें कि और इसमें इसी के साथ एक सवाल ख्वाहिश साहब इधर हूँ जी, जरा 5 मिनट लगते हैं आप मुझे देखते नहीं सर आप उसमें मैं आपसे सिर्फ इसी सवाल चलते हैं कि इस 4 में लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस का बेंच बना सकते हैं ना, तो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं ना 4 में, तो फिर 4 को 5 को इकट्ठा पढ़े तो अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। बस आप इसका भी जवाब दीजिए। बल्कि इसमें तो इसमें एड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे, जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे? डज दैट अगेन नॉट अमाउंट टू अ पावर being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ, अजय साहब, टू योर राइट। हम ये भी देखेंगे through this petition there is an order of this court, the act has been suspended, whether in presence of that order full court can be constituted or not, ये भी जरा आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम shall we proceed to the next council? फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? ठीक है, आप आइए। कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा, आप अपना किस पिटीशन में अगर बता दें। तीनों में ख्वाहिश साहब के साथ जी, तीनों में ख्वाहिश साहब के साथ। To write of 2 counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 में 6 हम बैठे हैं, एक में आप 7 में मेरी हाजिरी होगी। चलिए बताइए। Well, the proposition requires to be refocused. There is the fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question. With utmost respect, the primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction. You have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. So, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes... मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास. ठीक है, हम क्यों जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की? ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है. ठीक,
مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں، میٹر آف پبلک امپورٹنس، سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا، دوسرے والے میں تو آپ بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے برا قانون بنائے، یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184(3) میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے، وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن، پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے، ہمارے پاس بہت کھلے ہوتے. اب آپ نے بہت نیرو انتخاب کیا ہے، 184(3) کا انتخاب کیا ہے. My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. ججمنٹس حاوی نہیں ہوتے ہیں آئین پہ. اچھا 189 پڑھ لیں ذرا، یہ آپ لوگوں کے ذرا غلط فہمی کیوں ہے. 189 ایک سیکنڈ 189 پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں، ذرا پڑھیے 189. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. لفظ ہے all other courts, not the Supreme Court. تو یہ ہمیں ہمارے اوپر ہمارے پریسیڈنٹس نہ سائٹ کیجئے. اب آپ سے آئینی سوال پوچھا جا رہا ہے on all other courts, which means high courts and unless your lordship allows me to make a submission. ادر کورٹ کی بات کر رہا ہوں. No, I will not be able. ٹھیک ہے، آپ کو سوال دے دیا، آپ جواب دیجیے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں. میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی، بہت اہم کیس ہے، ارجنٹ کیس ہے، میں نہیں لگاتا ہوں. میری مرضی، صرف جواب دے دیجیے میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں، میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. انہوں نے میری مرضی لے لی، شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے، میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے، اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا صرف اس کو لگا دیں، کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو، جو ہمارا بجٹ ہے، میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجیے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا، ٹھیک ہے، میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی، میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی. میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے، اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا، وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے. ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو. میں تو بہت خوش ہوں گا، کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے، اس قانون کو اڑا دیں، میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم سب ایوری ون ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ کی پٹیشن لاتے، سپوز میں چیف جسٹس ہوتا، میں اس کو لگاتے ہی نہیں، تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے. کبھی 10 سال پڑا رہتا، میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ. آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا، میری رائے، میری مرضی، میری نہیں ہے. جب میں چیف جسٹس ہوں تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں، مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں می، مائی سیلف اینڈ آئی آر the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے، وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے، یہ شک کہ آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈنری لا، یہ ہو نہیں سکتا because this can only be done by a constitutional amendment. میں لفظ لکھا ہے aggrieved person. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ، آپ سے اگری کریں یا نہ کریں، میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کے، اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکو ڈک کا کیس چلا، دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکو ڈک کا
आ गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूँ फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना आए। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें। मैं ये मेरा मकसद ही नहीं है। आप anyway, मैं ये आंसर कर दूंगा। ये बिल्कुल 184(3) के जो कंडीशंस हैं वो भी मैं आपके सामने पूरी कर दूंगा, और वो दो कंडीशंस हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जी राइटली साइड से independence of the judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is your, you have read the law now, इसके ऊपर आप बता दें कि और इसमें इसी के साथ एक सवाल ख्वाहिश साहब इधर मुझे जरा 5 मिनट लगते हैं आप मुझे देखते नहीं सर आप उसमें मैं आपसे सिर्फ इसी सवाल चलते हैं कि इस 4 में लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस का बेंच बना सकते हैं ना, तो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं ना 4 में, तो फिर 4 को 5 को इकट्ठा पढ़े तो अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। बस आप इसका भी जवाब दीजिए। बल्कि इसमें तो इसमें एड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे, जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे? डज दैट अगेन नॉट अमाउंट टू अ पावर being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say कि that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ। अजय साहब, to your right. हम ये भी देखेंगे through this petition there is an order of this court, the act has been suspended, whether in presence of that order full court can be constituted or not, ये भी जरा आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट काउंसिल? फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? ठीक है, आप आइए। कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा, आप अपना किस पिटीशन में जरा बता दें। तीनों में ख्वाजा साहब के साथ। जी तीनों में ख्वाजा साहब के साथ। To write of 2 counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 में 6 हम बैठे हैं, एक में आप 7 मेरी हाजिरी होगी। जी चलिए बताइए। Well, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the Parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question. With utmost respect, the primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction. You have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. So, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes... मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास. ठीक है, हम क्यों जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की
یہ شاید آپ کے حساب سے یہ قانون دنیا کا بدترین قانون ہو سکتا ہے، ٹھیک، مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں، میٹر آف پبلک امپورٹنس، سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا، دوسرے والے میں تو بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے برا قانون بنائے، یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184(3) میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے، وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن، پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے، ہمارے پاس بہت کھلے ہوتے. اب آپ نے بہت نیرو انتخاب کیا ہے، 184(3) کا انتخاب کیا ہے. There are number of judgments of the Supreme Court. ججمنٹس حاوی نہیں ہوتے ہیں آئین پہ. اچھا 189 پڑھ لیں ذرا، یہ آپ لوگوں کے ذرا غلط فہمی کیوں ہے. 189 ایک سیکنڈ 189 پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں، ذرا پڑھیے 189. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. لفظ ہے all other courts, not the Supreme Court. تو یہ ہمیں ہمارے اوپر ہمارے پریسیڈنٹس نہ سائٹ کیجئے. اب آپ سے آئینی سوال پوچھا جا رہا ہے on all other courts, which means high courts and Unless your lordship allows me to make a submission, other courts کی بات کر رہا ہوں. no, I will not be able. ٹھیک ہے، آپ کو سوال دے دیا، آپ جواب دیجیے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں. Please, lordship. میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی، بہت اہم کیس ہے، ارجنٹ کیس ہے، میں نہیں لگاتا ہوں، میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں، میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. انہوں نے میری مرضی لے لی، شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے، میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے، اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا صرف اس کو لگا دیں، کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو، جو ہمارا بجٹ ہے، میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا، ٹھیک ہے، میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی، میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی. میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا. وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے، ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو. میں تو بہت خوش ہوں گا، کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے. اس قانون کو اڑا دیں، میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم سب ایوری ون ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ کی پٹیشن لاتے، سپوز میں چیف جسٹس ہوتا، میں اس کو لگاتے ہی نہیں، تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے. کبھی 10 سال پڑھا رہتا، میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ. آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا، میری ذائع، میری مرضی، میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں. تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں، مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں می، مائی سیلف اینڈ آئی are the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے، وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے، یہ شک کے آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا، یہ ہو نہیں سکتا. Because this can only be done by a constitutional amendment. میں لفظ لکھا ہے aggrieved person. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ، آپ سے اگری کریں یا نہ کریں، میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کی، اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟
میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکوڈک کا آ گیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے, میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا, ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ ہے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں, اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بریف کر دوں گا, اور وہ دو کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے. Independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is you have read the law now. اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال, خواجہ صاحب ادھر ہوں جی, ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ مجھے دیکھتے ہیں. نہیں سر, میں آپ سے صرف اسی سوال چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا, تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں. تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. تو اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے, جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک question اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. حاجی صاحب, to your right. ہم یہ بھی دیکھیں گے through this petition there is an order of this court. The act has been suspended. Whether in presence of that order full court can be constituted or not. یہ بھی ذرا دیں. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم shall we proceed to the next council, پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ آئیے. کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا, آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی, تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. To right of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں, ایک میں آپ 7 میری حاضری ہوگی. جی چلیے بتائیے. Well, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question. With utmost respect, the primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction. You have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes... حضور میں پھر آپ کو بات سمجھایا نہیں سکا. For instance, let's take income tax ordinance. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے,
اس کو آپ بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے, ہم کیوں جورسڈکشن ایکسرسائز کریں 184(3) کی؟ یہ شاید آپ کے حساب سے یہ قانون دنیا کا بدترین قانون ہو سکتا ہے, ٹھیک, مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں, میٹر آف پبلک امپورٹنس, سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا, دوسرے والے میں تو بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے, برا قانون بنائے, یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184(3) میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے, وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن, پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے, ہمارے پاس بہت کھلے ہوتے. اب آپ نے بہت نیرو انتخاب کیا ہے, 184(3) کا انتخاب کیا ہے. My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. ججمنٹس حاوی نہیں ہوتے ہیں آئین پہ. اچھا 189 پڑھ لیں ذرا, یہ آپ لوگوں کے ذرا غلط فہمی کیوں ہے؟ 189 ایک سیکنڈ 189 پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں, ذرا پڑھیے 189. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. لفظ ہے all other courts, not the Supreme Court. تو یہ ہمیں ہمارے اوپر ہمارے پریسیڈنٹس نہ سائٹ کیجئے. اب آپ سے آئینی سوال پوچھا جا رہا ہے on all other courts, which means high courts and unless your lordship allows me to make a submission. ادر کورٹ کی بات کر رہا ہوں. No, I will not be able. ٹھیک ہے, آپ کو سوال دے دیا, آپ جواب دیجیے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں. میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجیے میری مرضی, میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی, میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے, میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجیے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی, میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے. ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پاس تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے, اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سب ایوری ون ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ پٹیشن لاتے, سپوز میں چیف جسٹس ہوتا, میں اس کو لگاتے ہی نہیں, تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے کبھی. 10 سال پڑھا رہتا, میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ. آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا, میری ذائع, میری مرضی, میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں. تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں, مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں می, مائی سیلف اینڈ آئی آر the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے, وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے, یہ شک کے آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا, یہ ہو نہیں سکتا, because this can only be done by a constitutional amendment. میں لفظ لکھا ہے aggrieved person. ٹھیک ہے, اب دیکھیے, اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا
کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر, ذرا اگریڈ آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں انفرادی نوعیت کی. اگر ہم